Hello, guys. Welcome to my session. And we will be starting the session at 2:10. Meanwhile, please, guys, have a look on this website that I'm sharing with you and read some news. Then we will be starting. Okay. Let's have a look on this section. Okay. What's happened in the Bitcoin so far? You have to go through it. Okay. And hello, Reem ma'am. Welcome to our session. हेलो जी, कैसे हो आप? सब बढ़िया मैम आप कैसे मैं अच्छी हूँ, थैंक यू। We will be जी। starting the session at 2:10. ओके। I will be sharing with you the news. Just share. Yes. Yes, guys. Please have a look on this. And we will be going to talk about because ये first headline है Bitcoin की. We will be discussing this today. So please आप लोग एक बार देख लीजिए. Okay. Let more people join. Then we can proceed.
ओके गाइस, मैंने एक कमेंट पढ़ा है जिसमें एक लाइक पर्सन इज सेइंग दैट ही वांट्स टू स्टार्ट विथ $50. सर यू कैन प्लीज दिस पर्सन इज सेइंग दैट या आई वाज एक्चुअली सेइंग कि मैंने कमेंट कि सॉरी वाईडीए सर आप बोल रहे हैं कि आप $50 से स्टार्ट करेंगे, प्लीज आप कर सकते हैं एंड इट इज सो नाइस कि आप $50 से स्टार्ट करें। मिनिमम देर इज अ लाइक लिमिट $3 एंड मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर $50 से स्टार्ट कर सकते हैं। बट आई वांट टू बी डिपॉजिट इन इंडियन करेंसी, यस यू कैन कन्वर्ट दैट। वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यूपीआई में जाएंगे ना, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, so hello, welcome all of you to our live streaming, and thank you so much of all who have who have joined our live streaming today, and thank you so much कि आप लोग यहाँ पे लर्निंग के लिए आए हैं। सर आपको like you are going to get an option there, you can do a UPI and you can convert whichever UPI you want to choose. The app is from Google app or Paytm or PhonePe. You're going to get the option और उस पे click करके you can deposit as much as you want. Okay, guys, please open your account with us because I want to give you a live trade. I want to discuss with you some insights, and for that, it's very necessary. It got hanged. Just 1 minute, guys. Yeah, it's very important because if you're not like you have not opened an account with us, then it will be very difficult for me to give you. Can I deposit 2,000? Yes, you can deposit any money, guys. In 2000, maybe I think $3 is something around 80 rupees, 85. $3 is 240, and I think so. It's 2000 would be I think $10 or $15, I guess. So yes, you can deposit any currency, sorry, any amount, but minimum we are starting limit is $3. Maximum there is no limit. OLB sir, you can deposit. And right today I will be like actively chatting with you on comment section rather than speaking a lot with you because whatever I am speaking with you on this video, people are generally not able to get it, and that actually creates some misunderstanding, confusions. So I want to talk to you personally. So I will be replying to each comment that you are guys actually asking me. I'm going to reply every comment. Okay. Every queries is to be answered and is going to be answered here on this session. And I really wanted to talk about some insight. What I mean from insight is about the news story that is happening in the market and what are its conclusions, what are its effects, and what will be the effects in the future. So, Saina, it's not something you can please click on the deposit banner. The ma'am has shared the deposit banner above also, and you can have a look on the comment section. Yeah, there you can see the deposit banner, and in that also you can have the dollar signature. You can click on it and then you can make a deposit. Okay, I will be like sharing you the full information. Okay, guys, so we will be discussing about it. Just give me 1 sec.
So, guys, for today, my main focus is to give you some lectures today because lectures for actually our participant, one ma'am, Shigo ma'am actually asked about which is a good pair to start in the forex market. So we don't have any like particular pairs, but we do have strong pairs, and for that, let's shift our focus to some lectures. I think for half an hour I will be sharing some lectures, and after that we will be discussing about cryptocurrency. Okay. Shigam, I will be sharing you the lectures, and I think the lectures is going to talk about the forex market. Then we will be turning onto the crypto, and I will be sharing you the live trades. This is going to be the full plan. Okay. Just give me 1 minute. This is the best platform, guys. Trust me. You can learn n number of things here. Just go click on it, type any course that you want to learn, and then it will give you a number of courses as an options to start with. So today our main focus, we are starting with the forex trading course, then we will be starting with the crypto trading course, and then we will be proceeding for the discussion. I don't know why I have been logged out from this site. I will share this. I hope it I don't know why it's not putting. It's not open. Yeah, you got it. Yeah, yeah. Yes. So today we will be learning about forex market, forex trading mastery. Okay, so okay, ma'am. Guys, you also can simultaneously invest in the forex market also, but everything needs to be in a proper order. And for that, it's requested to all of you that please open an account with us, deposit, and start your account. $3 is of very minimum amount that we are asking to make you deposit, and then you can open an account. So forex trading would be the first thing. Hot and new, okay? Yeah. Starting, please guys have a look on this, and we will be talking about a lot of the stuffs that's happening in the forex market. But please have a look on the forex market intro, and then we will be discussing it. Okay. Hello everyone, you're welcome back. We're going to be kicking off with the foreign that stands for what foreign exchange. Now, what's the foreign exchange market? Well, there are a lot of sites today I that can don't know actually why. help Yeah, you we get will be started. sharing you, but I don't know why it's not visible. Crypto the market does not Sorry, sleep, but guys, the the forex market sleeps visual is during not the weekends because the same. banks do not open during the week. Hello everyone, and welcome back. It's Tekris here, and today I'm thrilled The screen is not visible, so I'm not sharing you during this the code. weekends, right? So as a result Okay. of it, the FS I don't know why. What's wrong with the problem? It's new code, so we cannot say anything. Also, candlestick wagon, the complete forex exchange. Yeah, Omega. Omega is yeah. I wanted to give you the best information as possible. Okay, please, guys, have a look on this. Banter evolution, the gold standard forex market, how to make money in the forex currency pairs. Shibu ma'am, you were asking about now which pair to start with, then we are going to have the currency pairs. So please have a look on this.
why it's not visible, guys? Yeah, it's not. Now let's discuss about currency Shiva pairs. ma'am, it's for So you. currency Please pair have a look on this currency pairs and then you can discuss with me. is when you compare the value of one currency to another. In trading, you're often going to hear or you're going to see statements or questions like which pair are you trading or what currency are you looking at. And in this video, I'm going to break down everything about currency pairs. Base currency, code currency is very simple. You're going to understand it very quickly, but it's important because once you understand this, everything becomes simple in Forex. So when we have, for example, euro dollar equals 1.17, this is what you see on the chart. This means that 1 euro equals 1.17 US dollars. So when you look at a currency pair or want to trade a currency pair, you are referring to the first currency in the pair. So in every pair, the first currency is going to be called the base currency, which is always 1. And the second currency is going to be called the quote currency. And the quote currency, it's actually the price of the pair. So the codes that are being used here are defined by an ISO. So more exactly is the ISO 4217, and we are going to look at this. So those have been established a long time ago for all the countries in the world. So every country has a unique code to avoid confusion. So the quote currency, it's called like this. This is called quote currency because we are quoting the price of the base currency. So this is quoting the price of the base currency, which is 1.70 in this case. But for all the other pairs in the world, you use the exact same formula. One base currency equals this price of quote currency. So a good trick to think about here is to think that the base currency is always 1. So there are no fractions here, there are no difficult calculations. This is how you can think about, and I'm going to show you immediately on the chart how to look at them as a trick to think about them fast. And in time you're going to learn, this is going to become your second nature. So ISO 4217. So this is an official ISO 4217 currency name. Those are the currency name for all the countries in the world. And there is also the ISO.org website. And here we have all the countries with all the codes. So if you take a look at the charts, here we have the US dollar, Swiss franc. US dollar is the base currency. So this means that 1 US dollar is going to be equal with the price of this currency pair. Was the price here? It's a 0.800 right now. We can say 0.8. So it means that $1 equals 0.8 Swiss francs. Let's choose another pair and do another exercise. Aussie NZD, which is the New Zealand dollar. Here we have Australian dollar, New Zealand dollar. So this means that 1 Australian dollar equals 1.1 New Zealand dollars. So this means that the Australian dollar is 10% more valuable than the New Zealand dollar. It means that to buy 1 Australian dollars, you need 1.1 New Zealand dollars. And let's check another one. British pound, Japanese yen. So to buy 1 British pound, you need 199 Japanese yen. So you need 200 Japanese yen. So I verified this with Google. I write it here 200 Japanese yen in pounds. And we get 1 pound sterling. So this is the standard for all the currency pairs. The exchange rate is always in terms of quote currency per 1 unit of base currency. As you can see, it's very simple. There are some standards. And as a summary on the chart is showing the base currency. So if this chart goes up, it means that the dollar goes up. So if every time you're looking at the chart, you're looking at the base currency, which is euro, the price is going to be the quote currency, which is right here on the scale. And in TradingView, if you use TradingView, you can also see it here. So that's why when we look at GBP USD, for example, here we have USD. If you look at Euro USD, here you have USD. So you can screenshot this, write this on your notepad, or write down that this is the video where you are already
always going to find this information. So you can come back to this whenever. So guys, this was the first video. Now, next lecture, I think you got this right. Which currency pair to start with? First, we have USD and Euro. You can invest on that. Okay. Yeah. So first currency we have is USD and Euro. You can invest on that. Second, I will be sharing you the more updates about it. But USD is important and Euro is also important. So you have to compare both of the base and then you can invest it. Okay. So this going the first pair. Shibu ma'am, this going to be your first pair. You can invest in Euro and you can USD. Okay. Now, major and minor exotic cross pairs. We want to know about Now let's discuss major about and currency minor cross pairs. So please have a look on this. pairs and the differences between them. So we have major pairs, we have minor pairs, we have cross pairs, and we have exotics. There are 7 major currencies: the US dollar, euro, Japanese yen, British pound, Australian dollars, Canadian dollar, and the Swiss franc. And those currencies are not all equal between them. This means that some of them are traded more and others are traded less. The US dollar is the most traded currency, followed by the euro, Japanese yen, and the British pound. And this means that they don't have the same liquidity between them. So the US dollar, because the most traded, has the most liquidity, and then we have euro and Japanese yen, followed by the British pound, Australian dollar, Canadian, and the Swiss franc. So this aspect affects those currencies in terms of stability, movement, and correlation, as we are going to see in a future video in this course. Those are the major pairs. So we have euro dollar, pound dollar, dollar yen, dollar Swiss, dollar CAD, Aussie dollar, and Kiwi dollar. So the currencies, they also have nicknames. It's not important to know this or to use those, but nicknames, they come from the fact that, for example, if you have New Zealand dollar versus US dollar, it's a little harder to pronounce this to be like New Zealand dollar, US dollar. It's a little easier to pronounce euro dollar or pound dollar. So that's why the New Zealand dollar is called Kiwi, and they use the name Kiwi dollar. And they also have individual nickname. I'm going to show you all of those immediately. Before that, we need to discuss about what is major, what is minor, what is cross, and what is exotic. So the main currencies traded against the US dollar are called the majors. And there are 7 of them, as we can see here. So when we discuss about the major currencies, there are 8 major currencies. There is also the Kiwi here, the New Zealand dollar, which is not here in this list right now because the least liquid currency, but it is considered a major currency. So all the main currencies traded against the US dollar are called major pairs, and there are always 7 of them. The minor pairs are pairs that include at least one major currency, but not the US dollar. So the pairs that include a major currency without the US dollar, they are called minors. So every pair that has those majors, so at least one of them, it's called a minor. For example, if you have a euro, Japanese yen, or British pound, Japanese yen. And then we have cross pairs, which are any pair that does not include US dollar, regardless of which currencies are involved. So there is an overlap between minors and cross pairs, and also between cross pairs and exotics, as we are going to see. For example, as a minor, you can have euro, Turkish lira, or euro against the Norwegian krone. So those are minor currencies. Minor currencies are currencies that they come from a powerful economy, but they are not those 8 that we have here.
So we have the Swedish krona or the Norwegian krona or the Turkish lira. So those are powerful economies, but they're not considered major currencies. So minor pair, it's any major currency against one of those minor pairs, one of those minor currencies. That of course do not include the US dollar, because if it includes the US dollar, that will automatically make it a major currency. So cross pairs are any pair that does not include the US dollar, regardless of which currencies are involved. So you can have even Swedish krona against the Norwegian krona, or the Swedish krona against the Turkish lira, for example. So those are minor pairs, and I'm going to show you a list of that. And the exotic are a major currency against a smaller emerging currency. So those, they can overlap sometimes with cross pairs. And this is when you have the euro against the Mexican peso. So I'm going to show you a big list with all of those, because there are a lot of smaller emerging economies. So we don't discuss here about small countries necessarily, because Mexico, for example, it's a big country, and I know it has a big economy, but it's not considered a major economy. It's considered an emerging economy. And here we have the nicknames. So euro dollar is called the fiber, British pound dollar is called the cable. So those are because of the cables that there are under the ocean between USA and Europe. Then we have the dollar yen, which is called ninja or yappy. So there are some of them, they have multiple nicknames. The dollar Swiss franc is called the Swissy. The dollar Canadian dollar is called the loonie. Aussie dollar is called Aussie. And the New Zealand dollar versus the US dollar is called the kiwi or the bird. But the kiwi, it's a name that you'll hear all the time, or kiwi dollar. Then crosses, euro pound is called the channel. This is because the tunnel of between Europe and Great Britain. Euro yen, it's called the UP or the UP, the EUP or the UP. So I remember now the dollar yen, it's also called the beast. Then we have the pound yen, it's called the dragon or the gepi or the beast. Aussie yen, kiwi yen, loonie yen, Swissy yen, euro Swiss, pound Swiss, and Aussie kiwi. So as you can see, most of those names are because it's more difficult to pronounce Australian dollar versus New Zealand dollar. It's easier to say Aussie kiwi. And here we have more examples with the majors, with minors, cross pairs, and some exotics. So major pairs, we have them here. Then we have the cross currency pairs. Euro crosses, we have here Euro GBP, Euro Aussie, Euro CAD, Euro Swiss, Euro Yen, Euro Kiwi. Then we have the pound crosses, the Aussie crosses, the CAD crosses, the Swiss crosses, and New Zealand dollar. So if you ever want to make all the 28, I think it's 27 or 28 major and cross currency pairs that you should have in your list and watch them. And then we have the exotics. You can just have the majors and then take each one of them, like you see here, and make the crosses against the others. And I'm going to show you immediately why we have euro first, GBP first, or other orders like this. So I'm going to show you this information from Wikipedia. There is a standard that they did a long time ago, and it says here that from its inception in 1999, as stipulated by the European Central Bank, the euro has first precedence as a base currency. Therefore, all currency pairs involving it should use it as their base. So euro is going to be first. Every time you have a cross with a euro, euro is going to be first. If euro is second, that's not a real cross or a real pair. And I'm telling you that because there are a lot of brokers or a lot of that they just do that. And they make their own pairs, and you shouldn't lose your time with that. So there is no standard setting body or ruling organization for this. It's just a rule that they established from the beginning, and it's always like that. So this is the order in this convention, in this rule. Euro will be first, then we have the British pound, then we have the Australian dollar, the United States dollar, the US dollar, it's fourth, Canadian, Swiss, and Japanese yen. So this is the order for which currency is going to show first inside the pair. And of course, there are also some exceptions. For example, as you can see here, the Mexican peso has precedence against the Japanese yen, for example. So this is a real pair. So those are some combination between cross and exotics that you can trade if you are interested in this kind of stuff. But if you look at the cross pairs and the majors, that's enough to
cover your whole time. And this is the full list of all the exotic currencies. So we take all the majors as base currency against all the exotics, and we have, so you see US dollar is quoted against all of them, but the other majors, not all of them, they have a cross with. Guys, you can please copy this or you can just click a photo. See, these are the currency base. You can calculate basis on this, like USD and try Turkish lira. Please, guys, have a video or have a picture of this. Please click a picture of this site of the screen, sorry, and please note this that these are the currency base. Whenever you are doing the forex, then you have to keep in mind these are the things that you have to calculate the currency on basis of this. For example, British pound, then Turkish lira, GBP as a base currency, JPY as a base currency, CAD as a base currency, and AUD as a base currency. Okay, please, I have just paused this screen for you so you can click the picture. Okay, Shibu ma'am, you can please click the picture if you are watching this video. I've actually shared this for you all so that we can proceed with it for the forex, because today I will be discussing about forex. Why I want to discuss about the forex is because I want that it is underrated thing that we should discuss more about it and we should invest in it. Just plan to invest, just know about the basics, and then along the side of crypto, we can also plan to invest in the forex market. Okay, guys? Good afternoon, BS Rajput sir. Welcome to our session again. Okay. So we will be waiting for this section to over. रीम मैम BTC अभी ऊपर जा रहा है तो हम BTC को बाय करेंगे. तो guys please buy BTC. It's already upward 0.03% से ऊपर जा रहा है. So BTC buy कर लीजिए guys. Buy BTC, okay? बाय बिकॉज ऊपर जा रहा है तो बाय करना है. थोड़ा ऊपर जाने के बाद आपको 0.5 से 1% का कुछ तो आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे. यू हैव टू ग्रैब दैट एंड प्लीज आप बाय कर लीजिए. ओके, कम रेशियो के प्रॉफिट के लिए ही आप सोचिए, ज्यादा मत सोचिए कि बड़ा प्रॉफिट हो इसके चक्कर में आप करते जाएं. लेट Those मी शो यू दिस. ओके, ट्रेडिंग व्यू. Okay, so you can see that Bitcoin is already on a, like it has touched a 63,000. Now again it is on a 63,000, but a little bit of decline you can see from here. So I think it's best if you can buy the Bitcoin. It will going up, up, up. So 63 आपका अभी बेस कर लीजिए, and जो आपका स्टॉप लॉस लगाना है वो 60 स्टॉप लॉस आपको लगाना है 61 पे. जैसे मैंने आपको यहाँ पे लाइन दी थी कि 64 तक तो वो जाना चाहिए, तो अब ये जाएगा. तो इसी लाइन को फॉलो कीजिए कि रेजिस्टेंस वुड बी 65 एंड योर स्टॉप लॉस वुड बी 61,500. ओके, स्टॉप लॉस 61,500. आपको गिफ्ट कूपन भी मिल चुका है गाइस, यू कैन ग्रैब इट. ओके, रेजिस्टेंस तो उतना ही ऊपर जा रहा है, तो 64,907 like 65,000 तक यू कैन एक्सपेक्ट इट टू ग्रो. ओके, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको. एक और चीज जो है, what moves the price in the forex, we will be like discussing this soon, but तब तक के लिए please note this. In this video, we will Nothing discuss very about the real forex market structure and what actually moves the guys please copy, like ये देख लीजिए आप. मैडम जी मेरा इथेरियम पहले से बाय है. गुड सर, गुड सर. यस राजपूत सर, नाइस, यू हैव ऑलरेडी परचेज इथेरियम, इट्स सो गुड. अच्छी बात है.
ओके गाइस, तो अभी ये प्लीज आप देख लीजिए एंड उसके बाद फिर हम क्रिप्टो के ऊपर आ जाएंगे. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्रिप्टो. तो अभी के लिए ये लेक्चर देखते हैं एंड फिर हम एक पूरा समराइज करूंगी मैं कि व्हाई क्रिप्टो प्राइसेस मूव, बाय व्हाई फॉरेक्स मार्केट प्राइसेस ग्रो, सॉरी, नॉट एबल टू स्पीक, व्हाई फॉरेक्स मार्केट प्राइसेस मूव, व्हाट triggers the moves and why crypto moves. So ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे. प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस. ओके, एंड यू विल बी, मैं आपसे पूछूंगी आपको क्या समझ में आया इस लेक्चर The से. price on the chart. तो मैं So सबसे पूछूंगी जिसको क्या समझ में आया कि फॉरेक्स मार्केट की प्राइसेस व्हाई इट मूव्स. आई वांट टू नो फ्रॉम यू. ठीक है. I started trading Forex for the first time. I learned everything about retail trading, support and resistance, supply and demand. I started to read books. I also started to watch some videos. And I was surprised that I couldn't find a lot of discussions about what seemed to me the most important thing, and that is what actually moves the Forex price. I wanted to know where is this data feed coming from that I see on the screen. All of those candlesticks, where are those coming from? Because there was no one talking about this. Everybody was saying that there is no central office for Forex, that it's an over-the-counter market. In fact, a lot of trading educators in courses and gurus, they were insisting on that. Everybody wanted to show you some kind of secret technique that they have to make money in Forex, but nobody was explaining, look, this is how the price is moving, and this is why this technique works. In fact, nobody knew how to explain how this whole Forex works. And because of that, I became immediately suspicious about everything, and I just couldn't trade supply and demand, support and resistance. It just didn't seem normal that institutions and banks and private companies, they are free to just push around the price with supply and demand, influencing the world and the whole economy. So because I couldn't make this work, and I did not like this idea of supply and demand, support and resistance, I couldn't trade intraday trading for a long time, and I was just doing longer term trading. And it took quite some time to learn things about the economy until I started to work for a prop trading company and for a hedge fund, where I learned a lot about this. So in this video, I will show you everything that I wanted someone to show me when I started. And this is going to be very important because it's going to help you throughout the course to understand everything that I'm going to show you and why those tools, they work the way they work when you're going to learn them later. So when you do like a Forex course, or if you look for this on YouTube, when they talk about the Forex market, saying that it's an over-the-counter market, they generally show you this structure. So you are here, you are like a retail trader which uses a broker. Your trade is being sent to large traders like banks, big funds, institutional traders or money makers or liquidity providers. And then this is being sent to the Forex dealers. So this is some kind of structure that you can find it everywhere on the internet. But to me, this is incomplete. It doesn't explain anything how this really works, because many times you will have brokers that are not going to send your order to the market. In reality, most of the brokers, they do not send your orders to the market. And later in the section where we discuss about brokers, I'm going to show you how to find this. We also have modern technologies in 2026 that you can use, and I'm going to show you this there, and how to find brokers that send your orders to the market. But even like that, this is not very important. There are other important things about brokers and what is actually going on here with those large traders and the Forex dealers, because a lot of people who teach traders, they try to make it seem like this is the whole market and we are all together in this, but in reality, we're not. In reality, this is where the market is. This is where the counter is. When they say over the counter market, this is the counter. In fact, there is a counter, and I'm going to tell you exactly how it's called. And those guys here, they collaborate with those guys here, and those guys here, they also like to include those guys here because it kind of helps. So it's more like a huge collaboration, but the price, it's made right here. So they make the price. Everybody else doesn't have nothing to do with how the price moves. And this is what I'm going to show you in this video. So everything started in about the year 1989, when the two platforms that are also used today, they launched for the first time. So one of them,
it's called EBS, Electronic Broking Services. So this is the infrastructure, this is the platform, this is the counter, if you want to call it like that. And the other one, it's called now LSEG, which comes from London Stock Exchange Group because they purchased it, but it had a different name back then, which we are going to see immediately now. Those are the two platforms where the Forex prices are being made internationally. If you do research, you can find online that there are other smaller platforms, but I can tell you that 100% those are the main ones and they dominate any other platform. This is where all the big banks, they come to trade, and this is where the price are being formed on those two platforms. So the whole Forex international market is being split between those two entities. EBS Electronic Broking Services is currently owned by CME Group, which is Chicago Mercantile. यस श्री मैम, आपने शेयर किया है, मेरा ध्यान था इथेरियम की तरफ, तो मैं आपको बता Exchange. दूं You can इथेरियम में also क्या do हो research सकता about है. थैंक यू री मैम, आपने बहुत सारे ऑडियंस का क्वेश्चन पूछा है हमसे. थैंक यू री मैम. इथेरियम. ओके गाइस, मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन आपको बाय करना है, तो सेम आपको इथेरियम भी बाय करना है. आपको पता है कि बिटकॉइन एंड इथेरियम वर्क्स simultaneously like each other, they are similar. So if bitcoin increases, ethereum also increases. So ethereum is also about to incline few in the further weeks. We can see there, yeah, this is going to be 1700, and at the upcoming time it's not going to increase that much in that much percentage. I think minimum 2% or 1% would be the increase, and 2% increase हो रहा है, so you have to wait for a longer period of time. But as the ask about the signal, so buy करना है इथेरियम भी. Bitcoin buy किया, इथेरियम buy किया, wait for some more time for it to increase at least and cross it to 1000, wait, 1800 I think. So if it is inclining on 1800, then it would be so much good because you will be getting at least 2% of the profit. You will be booking that much amount. So आप लोग इथेरियम बाय कर लीजिए, बिकॉज आप बिटकॉइन बाय कर रहे तो इथेरियम भी बाय कीजिए. गाइस, मैं नोट कर रही हूँ कि आप लोग डिपॉजिट नहीं कर रहे. गाइस, आपको डिपॉजिट करना होगा अगर आपको हमारे साथ अकाउंट ओपन करना है और हमारे अकाउंट से आपको ट्रेड्स लेने हैं. It's very important, guys, to please deposit minimum currency, minimum amount, $3 maximum, no limit. It is for you. The amount is going to reflect it on your account. Don't miss the opportunity, and please, please, I request every one of you who are interested in the trades, Forex and Ethereum and Bitcoin and like cryptocurrency, guys, please invest. Invest with us and you will be getting the profits. Okay? तो हम ये कंप्लीट कर रहे हैं. यहाँ पे कितना बचा है? थोड़ा सा बचा है. वाई फॉरेक्स प्राइसेस मूव, मुझे बताना आप लोग. मैं आपसे पूछूंगी कि फॉरेक्स प्राइसेस क्यों मूव होते हैं. जिसने आंसर दिया उसको बीडीसी कॉइन्स ज्यादा मिल जाएंगे, मतलब जितनी लिमिट है उतनी, बट फर्स्ट उसको दे दिया जाएगा. तो मुझे बताना हाँ कि क्यों मूव होता है फॉरेक्स एक्सचेंज या फॉरेक्स मार्केट. ठीक है, सो इथेरियम बाय. ओके, इथेरियम बाय कर लीजिए. अभी कितने अमाउंट में है इथेरियम? तो मैं लिख देती हूँ 1726 आई थिंक, राइट, 24 बाय. स्टॉप लॉस कितना लगाएंगे? 1647 या 1660 स्टॉप लॉस. ठीक है, चलिए. थैंक यू री मैम फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. ओके, about this to see who owns CME Group. It's being said that it's a publicly owned company, but it's being owned by American private equity, the biggest funds in America, and of course LSEG is owned by London Stock Exchange Group. Here are some other details. CME Group also owns
CBOT, which is Chicago Board of Trading, NYMEX, it's New York Mercantile Exchange, COMEX, Commodities Mercantile Exchange, and Chicago Mercantile Exchange. You're going to see later why I show you this. Because Thank you, AGQWX sir, for your deposit. Thank you so much. Thank you. Welcome to our app, BTC app. Thank you guys for joining. I wish you all the luck for your best crypto trading journey and your profits. Oh, sorry. मैंने लिखा thank you sir, welcome. I'm so sorry. I'm, so, I'm sorry. Yeah. Thank you sir. Welcome to our app. Okay. Yeah. Please we're continue. going to look on the platforms to see where you find the original assets. They come from those companies. Here in COMEX, it's where the price of gold is being made, and all the other commodities and futures from agriculture and oil, energy, everything. The prices of all of those is being done here by those companies inside this group here. They use platforms the same as EBS, but the original EBS, it's only being used for Forex spot trading. And also we have London Exchange Group, which is the platform infrastructure. The platform itself, it's called LSEG Data and Analytics. And before that, it was being called Refinitiv Reuters. This has been launched in 1989. But when London Exchange Group purchased it, they just ditched the name Refinitiv Reuters because Reuters it's a different brand, and they called it LSEG Data and Analytics. And they also own the stock exchange. They own the FTSE Russell Index and other subsidiaries. And EBS was launched in 1990s, so 1 year later of LSEG. And this is how basically the market is being split. So those two companies together, especially this one, which is in USA at the CME Group, they deliver the price for indices, agricultural, energy, commodities, crypto. All the other exchanges, they buy the data for their CFDs. So if you see other CFDs that are offered by different brokers, we will see all of those when we look at the charts. They all buy the data from those companies here. All the charting and trading companies like TradingView and all of those guys, they buy the data from those companies. I pay extra money for TradingView to get real data from CME Group, and also all the brokers, they buy data from here. So your price on the charts, no matter where you are, no matter what you're using, this is where it comes from. It comes from this platform and this platform together. So EBS, they have a service like a product that you can buy, and that is their live data feed that can be purchased by any company so they can make their charts. Now to go a little in details, EBS from CME Group, they deal with euro dollar, with dollar yen, dollar Swiss, euro Swiss, Asian pairs, and LSEG matching, which is LSEG Data and Analytics. It's also called LSEG matching. They deal with pound dollar, Aussie dollar, Kiwi dollar, dollar CAD, and mostly they deal with Commonwealth linked crosses. So those are the Commonwealth crosses, which are pound, Aussie, Kiwi, and Canadian dollar. What does this mean? Well, all of those, they have in common that they are Commonwealth countries. They all have the same king, which is the King of England. So this is how they're organized. They still have a king, Canada, Australia, New Zealand. This is what Commonwealth is. If you don't know about that, do some research on that, about the history of how all of those countries, they share the same king. Over time, the lines blurred a bit, but this division of currency ownership remains a core market convention. So if you would have access to those platforms to trade, if you're like this big bank, you'll have to check and use LSEG if you want to trade Aussie dollar, for example, and you'll have to check EBS to trade euro dollar, for example. So now let's simplify this a little. We have EBS, Electronic Broking Services, which is the infrastructure or the platform that is being located at CME Group, Chicago Mercantile Exchange. And we have LSEG, London Stock Exchange Group, which is the platform located at London Stock Exchange Group. So you can imagine that this is in Chicago, this is in London, and they deliver the price for all of this stuff. Of course, UK has also their own stuff, agriculture, energy, commodities, crypto, but mostly everybody trades what is offered by CME Group when it comes to this kind of stuff. So what is to understand here is that this is the counter that they use. So if you remember when we were discussing about the manipulation in the Forex market in the section about history,
this is where the manipulation was happening. So on these platforms or the smaller platforms, because at the beginning those platforms, they used to be pretty private from a point of view, and in time governments had to step in and they started to make rules for all of those banks and institutions, and they made them create softwares and algorithms that are being used together to deliver the price and to make sure that nobody can manipulate and nobody can cheat. So when we say that the government stepped in, it's not like the president contacted those guys and they discussed with them. No, they need an institution. They need a governmental institution. So what's that governmental institution? Well, those are the central banks when we're discussing about Forex. So from now on, I'm going to refer to Forex only when we discuss, because this is a Forex course. What is happening with indices, agricultural, energy, commodities, crypto, it's another story. That's for another course. So they start to have heavy regulation and clearing from central banks, starting with Federal Reserve. So, why forex market prices moves? Electronic broking services (EBS) platform, Chicago Mercantile Exchange, London Stock Exchange, and London Exchange Group. These are the things. These are the platforms. They deliver the price index. Other exchange buy the data for CFDs. Charting and trading companies buy data. Brokers buy the data. These are the things that actually move the forex prices. Yes, Rajput sir? Hi, I need a group in us first to know each other, learn how to try answer if you're interested. Guys, I request Moses sir, please guys stop sharing any WhatsApp number, any personal messages or any personal details of yours in this group, because you don't even know that there must be some scammers that actually collect or breach your security and they're going to message you. Moses sir, please delete the number. You don't there are a miscellaneous participant in this live streaming. We can't trust each and everybody. So please guys don't at all. I request every one of you to please stop sharing your personal details. We won't be responsible if you guys, sorry, yeah, if you guys met with some other or experienced some other scams or issues or some other scams that's happening, तो उसकी वजह से please guys, it's request to all of you to please stop sharing your personal details. अब मुझे नहीं शो रही है ये। मुझे ओल्ड सर वाले ने भी यहाँ शो पे रहे हैं। ओल्ड हाँ, वाले में ही शो हो रहे हैं, हाँ कोई बात नहीं. आई एम अ न्यू ट्रेडर. न्यू ट्रेडर्स डिपॉजिट एंड ओपन योर अकाउंट. आपकी पहली टिप होगी कि आपको डिपॉजिट करना है एंड अपना अकाउंट ओपन करना है. ठीक है, अभी मैं क्रिप्टो के बारे में बात करने वाली हूँ. ठीक है, मैं क्रिप्टो के बारे में बात करने वाली हूँ. तो मुझे चाहिए कि आप प्लीज, आप न्यू ट्रेडर, एज अ न्यू ट्रेडर गाइस, प्लीज डिपॉजिट, ओके, एंड देन ओपन एन अकाउंट विद अस. तो आई वाज एक्चुअली सेइंग कि न्यू ट्रेडर्स, जितने भी न्यू ट्रेडर्स हैं गाइस, प्लीज डिपॉजिट करें. डिपॉजिट करने के बाद आप हमसे ट्रेड्स ले सकते हैं, आप ट्रेड सिग्नल्स पूछ सकते हैं और मैं आपको हेल्प भी करूंगी. ठीक है, मुझे एक बात पता करनी है आप लोगों से कि हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक फॉरेक्स इन्वेस्टर. कितने लोग फॉरेक्स में इन्वेस्ट करते हैं? कैन एनीवन टेल मी? कमेंट करें प्लीज, मुझे पता होना चाहिए कि कितने लोग फॉरेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कितने लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं. कमेंट डाउन below. Press 1 forex, press 2 crypto. प्लीज कमेंट करें. डिपॉजिट करना ना भूलिए गाइस. अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो आपके लिए बेस्ट 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 अपॉर्चुनिटी होगी. डिपॉजिट कर लीजिए गाइस.
Come on. Waiting for them to comment me. Then उसके बाद मैं आराम से Forex. Okay, EDV sir. Congrats. One person. Good. Next. और कौन है Forex investor and crypto? Please मुझे बताएं. मुझे पता होना चाहिए कि इस लाइव स्ट्रीमिंग में क्या सबसे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है. सर BTC, you have to buy BTC. रीमैम ने अगेन asked about the signal. Buy. लिख देती हूँ मैं buy BTC and buy Ethereum. बताइए गाइस, क्लाइमेट का क्या हाल है? रीमैम, क्या चल रहा है क्लाइमेट का हाल? हमारे इधर तो बहुत गर्मी है यार। यहाँ पे भी एक्सट्रीम. नो रेन, कोई बारिश ओके। नहीं. EDV sir, let's start with the forex. Forex, yes sir, we have already completed the forex sir. I think you have joined late, but I will share you details. Don't worry. डिपॉजिट न्यूज और जुने सब कर लेंगे. आप सुनाइए कि हाल चाल है मार्केट के, हम देख लेंगे. हाल चाल है मार्केट के सर, 3 बजे बात करते हैं. मार्केट की हाल चाल सुनाऊंगी आपको. देखिए क्रिप्टो न्यूज विद शुभी सक्सेना 3 बजे आपके चैनल पे, BTC चैनल पे देखिए मार्केट की हाल चाल. सर आपने तो मुझे एक टैगलाइन दे दिया ना, दैट वी विल बी एक्चुअली. यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, स्क्रीन में बनाती हूँ कैनवा पे. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीजें करना, तो मैं भी कैनवा पे बनाऊंगी कि हालचाल, मार्केट की हालचाल विद शुभी. तो फिर या कुछ ऐसे क्रिएटिव न्यूज का मैं बनाऊंगी डीपो, एंड वहां पे लगा दूंगी ताकि जितने भी लोग हैं वो पूछेंगे अभी क्या चल रहा है, तो मैं उनको स्क्रीन शो कर दूंगी कि अभी ये चल रहा है. बार बार बताना नहीं पड़ेगा, है ना रीमा? बिल्कुल। वही. EDV सर, लेट्स गो. EDV सर, अगर आपको कुछ भी नहीं समझा, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड अ सिंगल थिंग, बिकॉज आई थिंक यू हैव जॉइन्ड लेट, or maybe you have joined just now and we are completed about the forex prices. A little bit is remaining. So what do you want to know about the forex? I will be discussing with you some pairs, the strongest pairs. Then we will be discussing about what's happening in the forex and what's happening in the crypto. This app is all about trading app. MC sir, please listen to me very carefully. Listen here. See, this is a trading app. You all know? Yes. This is a trading app. This is a trading app. You can get a lot of option. First is the cryptocurrency. We trade in crypto. We trade in forex. Let me show you the Bank app of first. England Then and we will be all discussing. other central banks. Give me 1 minute, guys. I hope it will be visible because I have to stop the share and again share the screen with you all. Let me pause it and then share you. Okay. MG sir, please have a look here. So this is the app. Okay. You can see this is the app. So what is this app? What is the app is all about? The app is all about forex trading. The app is about forex trading. The app is about a crypto trading. The app is about indices. The app is about shares. So this is a particular trading app. You can see here that we have a n number of options when it comes to the crypto market. Ethereum, Bitcoin, USGT. Why everything is dominant? Why every dominator is USGT? Because we are actually calculating and we know that the price of the each of the currency is in terms of USD only. That's why we have said USD. We have noted it as USD. Then you can see here BNB,
other things like gold, other silver, then GBP, then soil. These are the things. Then ZEC we have, then USDT. So these are all the crypto that we have. It's all the digital coins. You can invest here, but what you need to do, first thing that you need to do is you have to make a deposit. How you can deposit? Click on the link. If you have attended my live streaming and you continue to do so, then Reem ma'am has shared you the deposit banner, and you can also see the deposit banner on your above the comment sections above. You can click on that and you can make a deposit. You can deposit the minimum amount of $3. Now you will be asking, why ma'am, why are you asking us to deposit? Is because deposit is not for us. Please guys, let me clear this confusion of yours. Deposit is not for us. It's for you. Why for you? If you guys don't make a deposit, if you guys don't open your account with the BtcDana app, how will we help you regarding the cryptocurrency, regarding the crypto trade? Who will be giving you the crypto trade if you have not deposited? And what's the use for? What's the use if you have not opened your account with us and you're just randomly coming on a live streaming and then attending it, going back towards your work and other stuffs, and you're forgetting everything that I've shared with you because you're not following my leads, you're not following the trade signals, you're not understanding what I'm sharing the knowledge with you. So what is the use, guys? Correct or not? If if for example, if I want to invest in crypto, I surely have to make a deposit and open an account with BTC Dana, because I think if you are not at all interested and you're not serious about your investment, then you're not going to deposit because you think it's a random thing. Randomly, you can just come, you can go, you stay, you just leave whenever you want. It's not like that. Crypto market is a serious market, guys. It's a future market. It's not something that I'm not sharing you like it's not some of the prices of the vegetables. It's not like that. It's actually a serious market. You have to give your long hours, your durations, your time, your energy, everything to this. Then only you can grab the profits in the future. And this is very underrated investment option. Why? Because most of the people fail while they are trading and they actually blame the crypto market for it because they don't understand what is the right time that we have invested and which is the right time to withdraw the profits that you have earned. They don't understand the difference between these two. And then they blame the app, then they blame the cryptocurrency, and then they blame themselves because they have deposited on this app. Guys, everything has limits, everything has disadvantage. It's nothing that's everything comes up with advantages or benefits or potentials. Not everything comes with this. You have to understand for a better trader, it's allowed it to make some mistake. It's allowed it if you lose some money. It's allowed. Why? Because mistakes makes the man perfect. But you have to understand and acknowledge your mistake. If you're not understanding, you're not accepting your mistake and you keep on doing the same thing again and again, then I don't think so you would be called as a wise person. Okay? For a wise person, one should understand his or her disadvantages, his or her disqualities. And other than that, you have to plan your investment journey. Okay? So, guys, understand this clearly. You have to start with us. So, it is very, very important and essential for you all to please deposit on this app. And if you are depositing, you are actually adding this to your account. It's not for me, not going to credit it on my account or Remam's account or the company's app account. No, it's going to stay on your account. You can use it in the later times to start with your trading journey. Why I'm calling it every time the journey? Because journey is long. It's not short. I think that it would be lasting journey. In the future also this going to be the best app because here we give you all the things that we care about you. Because our first goal is our clients, our consumers.
So this is going to be the main thing, that if you invest on BTC Dana, you're not going to find secure platform than this, because we provide you BTC coins. We help you 24 into 7. The live streaming is on this app ongoing 24 into 7 every day except the Saturday Sunday. I think Saturday Sundays also on a certain time periods. But see guys, we are actually helping you all out to do well in your financial career. Okay. And if you're not interested in depositing or opening an account with us, and you are thinking that let's focus on this, I think it's not a big deal, guys. If you just make a deposit of $3 and then you just keep that that amount on your account, it's not a big deal. We are like we are using or spending money on random of things, correct? Random things we are depositing, correct? Why we are not thinking that much? We are not overthinking on spending on a random thing, but then why we are thinking so much when it comes to a deposit, when it comes to the most important thing, that is our investment? Why we can't plan our investment? Why? Since the time we thought that we will be investing it, that time only we will be grabbing with lot of the doubts, we will be surrounding with lot of the doubts around us. Oh, whether this app's going to be good or nice, whether it's going to be a scam app, a fake app, or whether they are going to help us or not. These are the things that keeps coming in your mind. That's okay. I acknowledge that. It does happen. With me also it happens. But when you analyze me, you analyze our session, you analyze this app, then you're going to get the answer. Oh yes, this is going to be. मैम हिंदी में बात करूं? सर आपने तो मेरी स्पीच ही बंद करवा दी है। कंप्लीट कर रही थी मैं, कोई बात नहीं। बोलना ये चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी डरिए मत इस ऐप में इन्वेस्ट करने से, बिकॉज ये ऐप बहुत अच्छा ऐप है। मुझे 100 सेशन होने वाले हैं बहुत जल्द, तो प्लीज अंडरस्टैंड करें। मैं 100 सेशन तो झूठ नहीं बोलूंगी किसी से भी। मैंने देखा है अपनी आंखों से प्रॉफिट होते हुए। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ अभी। ये रैंकिंग देख रहे हैं आप? ये रैंकिंग उन लोगों को हुई जिनने हमारे साथ काफी काफी ट्रेड लिए हैं एंड कंटिन्यू स्टिक रहे हैं हमारे ऐप पे, एंड उन लोगों को ये प्रॉफिट्स हुए। क्यों हुए प्रॉफिट्स? क्योंकि उन लोगों ने हमें नहीं छोड़ा। उन लोगों ने अपना पूरा विस्डम नहीं, अपना करेज के साथ उन्हें ये ऐप को यूज किया, ट्रेड्स लिए, और ये सारे उनके प्राइजेस। देखिए व्हाट प्रॉफिट्स दे हैव अर्न्ड सो फार। अब ये क्या एक दिन में हुआ होगा? नहीं। इट एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी 1 year, मे बी सम मंथ्स, मे बी 2 year। तो ये सच बात है। पोजीशन अब 24 आवर्स में कितना कितना प्रॉफिट हुआ है, अभी 24 आवर्स में इतने लोगों को प्रॉफिट हो चुका है ऑलरेडी। So why this is happening? Because they are trusting us. And guys, trust me, it's not a fake app, because मैं 100 सेशन से झूठ नहीं बोलूंगी। It's true app, आपके लिए ही बनाया गया है, अच्छा ऐप है, अच्छे से बनाया गया आप लोगों की हेल्प करने के लिए। एंड आप लोग जानते नहीं है कि आपको बीडीसी कॉइन्स गिफ्ट कूपन कितना इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रेडिंग के लिए, जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि you are investing it with all your heart and we don't want any one of you to lose your heart in this. कुछ क्वेश्चन था, because I'm from Nigeria, so I need to know more better before depositing, okay? I know, sir, you want to know about depositing. That's what I'm saying to you. Minimum, it's $3. Maximum, no limit. We don't force anyone to deposit. We just give you the hint, and we will just clarifying you the importance of understanding why the deposit is necessary for your trading journey. Okay? Any more questions so far? I hope it is clear. MCG, how you doing? Moses sir, any questions? You are being there with us a long time. I can see those faces. I remember those user IDs.
कुछ पूछना है? एनीथिंग यू वांट मी टू आस्क, क्लैरिफाई, पूछ लीजिए। देखिए गाइस, जून खत्म होने वाला है, इट्स ट्रू। हमारा अभी और 3 सेशन बचे हैं इस या हमारे और 3 सेशन बचे हैं जून में, तो जून खत्म हो जाएगा। मैं ये देख लेती हूँ मेरा कितना सेशन चल रहा है। या गाइस, मेरे अभी 92 सेशन चल रहे हैं और जून भी ओवर होने वाला है। तो आप लोगों को प्रॉफिट्स आने चाहिए ना, आपको इस ऐप से फायदा होना चाहिए, आपको मेरी लाइव स्ट्रीमिंग से फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कब होगा फायदा? जब आप लोग डिपॉजिट करेंगे, ट्रेड्स लेंगे, तब आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है? हमेशा छोटा प्लान करके चलिए। छोटा प्लान करेंगे तो बड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ जा पाएंगे। पहले से बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ भागेंगे तो हार जाएंगे, सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर आप अपने आप को ब्लेम करेंगे कि हमसे गलती हो गई। जरूरत नहीं है इतना। ठीक है? तो डिपॉजिट करें फ्रॉम एवरीवन हु इज अ ग्लोबल ऑडियंस, फ्रॉम नाइजीरिया, फ्रॉम अदर करेंसीज। Guys, please deposit and open your account and you can start with the trades. Okay? And with what I mean by starting with a trade, पहले तो आपको क्या करना है? अकाउंट ओपन करना है, डिपॉजिट करना है एंड उसके बाद आपको बाय करना है बिटकॉइन और इथेरियम। पहले से यही करके चलिए। सबसे फर्स्ट स्टेप, बाय द बिटकॉइन एंड इथेरियम। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इथेरियम और बिटकॉइन बाय कर लिया, सब सॉर्टेड है। बिगनर्स को इतना सोचने की जरूरत नहीं। सेकेंड, फॉरेक्स में क्या करें? आज तक पर एक न्यूज़ चल रही है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं मैडम जी ट्रेडिंग को, और आसान भाषा में समझने में की कोशिश कीजिए। हम समझ जाएंगे कहाँ से और कब बाय सेल करना है। हाँ हाँ भैया राजपूत, ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगी, हिंदी में बताऊंगी, सरल भाषा का प्रयोग करूंगी। मेरी हिंदी इतनी मुझे इतने वर्ड्स नहीं आते हिंदी के, पर मैं ट्राई करूंगी। ओके? कि आपसे अच्छे से बात करूं, वार्तालाप करूं और आपको अच्छे से समझाऊं कि क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है? कोई और क्वेश्चंस? कोई और क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रश्न आप लोगों के? पूछ लीजिए। इट्स ऑल फाइन गाइस, जस्ट आस्क व्हाटएवर यू वांट मी टू आस्क। Sorry, ask whatever you want to me to answer, then you can ask based on that. Hello RDDI sir, welcome to our session. Happy Saturday guys, happy Saturday. इतनी जल्दी सैटरडे भी आ गया। कैसा चल रहा है आप सबका सैटरडे? हाउ गाइस, हाउ योर हाउस योर वीकेंड गाइस? सैटरडे सैटरडे कर दी रही है। ओके, आई फील हैप्पी व्हेन सैटरडे कम्स बिकॉज आई एम वर्किंग और मुझे आपसे बात करना पसंद है। दूसरी बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को हेल्प करना बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, और ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना भी एक इट्स वेरी ब्लेसिंग, राइट? हाउ कैन आई कैश आउट? कैश आउट कैसे करेंगे? कैश आउट करने के लिए आपको आई थिंक कस्टमर सपोर्ट से बात करना होगा, है ना रीमा? विड्रॉ कर लीजिए। विड्रॉल करने के लिए यू हैव टू मेक अ कस्टमर सपोर्ट से बात कर लीजिए एक बार। ठीक है? एनी मोर क्वेश्चन सो फार ऑफ यू? ठीक है? So let's complete about this. You can deposit anyone if you want to make a deposit. Guys, please deposit and open your account with us so you can start with the trades. ठीक है? अब मैं stop करती हूँ शेयर करना। Crypto, how can I cash out on crypto? You have to just make a deposit and नहीं, you have to just contact to the customer support, and withdrawal actually takes a little time because I think today is Saturday and Sunday, na? So it's going to take a time. But what do you have to do is you have to transfer your
trading account amount to the savings account amount, and then you can deposit it and it will be credited to your source account. This is going to be the thing. So trading account se jo balance hai, you have to shift it to the savings account. Then go to the withdrawal option and then click on it and then you can withdraw it. ठीक है? I answered you, sir. IGS, sir, I've answered you. बीएस राजपूत सर, आपको पता है क्या कैश आउट कैसे करते हैं? ठीक है? ठीक है? So the Central Bank of America is the Federal Reserve, Bank of England, and all the other central banks for the major currency pairs. So those institutions, the central banks, they stepped in and they made those guys to do some rules and algorithms and softwares until now the price is almost 100% delivered by a group of algorithms. So we are going to see this on the charts also. So you can see how this aspect of supply and demand, it's not that powerful anymore, simply because it just failed in the past. It's not a conspiracy or something like that. It just failed. It didn't work like it should. So what are the central banks? We have the European Central Bank, the Bank of Japan, Bank of Canada, Reserve Bank of Australia, and Reserve Bank of New Zealand, each one of them for their own currency. So all of those guys, they had a lot of meetings together over the years and they did all of those rules. So to simplify this even more, for our course for Forex, so we know exactly what we are discussing about. I don't want to discuss about an algorithm or software or Forex dealers without knowing exactly who they are. That's why I'm showing you all of this stuff, and it's going to make a lot of sense through the course. So we have those institutions using those platforms where the software and algorithms are located, where the price is being made, with the central bank supervision with rules that have been already made, and they make the interbank price delivery. So they deliver the price interbank, and a lot of rules that they make, they have a lot of influence on the price right now. So even if the private banks and hedge funds and institutions, they put their money in and it seems like they are moving the price, in fact the price is going to move when the software decides that everything is cleared, that everything is okay. So clearing, or the clearing house, this is an actual institution. So for Forex, this is located somewhere in Switzerland, and there are some private companies that have been made by private banks that they do the clearing for Forex. So basically they verify when the money between banks have been physically delivered in accounts and the currency. So price is delivered through the platforms using complex algorithms and price engines, matching engines. So it's not the bank that it's trading money, moving the price anymore. No, the price engine or the matching engine will start to move the price when everything is being delivered, everything is cleared right now. So it's a little different. You see how when you get into details, the things start to make sense a little differently. And it's not so easy like a lot of trading educators are saying, that there are those Forex dealers over here and it's an over-the-counter market. They make it seem like there is a market somewhere in a city square where you can do this, but it's not, it doesn't work like that.
And those softwares and algorithms, they are built by those institutions and the central banks. There is a famous quote that says, "He who has the gold makes the rules." So this is very important because a lot of traders would say that this is just policy, those are just details, this is just politics, but it's not. The truth is that they make the rules. So a few details about those softwares and algorithms. So price is delivered through the platforms using complex algorithms that work together. So if you're a programmer or if you know something about that, sometimes softwares or programs, they have scripts that they can get activated depending on what is going on the main software or the main engine or algorithm. So it's the same here. Scripts and programs, they can get activated depending on what is going on during the day. So there are price engines that move the price. There are matching engines that match orders together. There are risk control algorithms that they can detect suspicious activities. And all of these include throttle rules. They limit how fast codes can be updated. Circuit breakers, they pause trading if prices move too fast. So many times if certain softwares, they decide that there isn't enough liquidity on the market, they will just move price up and down to pour liquidity back in the market, make traders close some of their trades. This is for the dealers, so this is not for the traders like retail traders. Last look, a controversial feature allowing banks to reject trades if the market moved against them too fast. So this is something that can trigger reversal in prices and so on. Latency filters, they prevent snipping by high frequency traders exploiting microseconds delays. I give you those names and those fast explanations, so if you want, you can check online some of those things. Surveillance algorithms watch for suspicious patterns, collusion, code stuffing, so you can search about this to see what they mean. They used to use this in the past to manipulate the markets, basically. Some algorithms manage how liquidity is streamed so that price action looks stable. So this, you might want to read this 2 times because sometimes what you see on the charts, it's a little different from what was happening in reality. And you cannot learn this, for example, if you work with one of those big banks. You can learn this if you work, for example, as I worked with a hedge fund, because they know how to deal with this. They know how to interpret price when it's about to do something, and you're going to see details about this. There are cracking correlations and all kind of stuff. So we can see those signatures in price if you know how and where to look. And this is why you often see step-like or flat price action before a sudden jump. Liquidity providers are holding back quotes until order flow shifts. And you can see this signature in price. We call this cracking correlation. And I'm going to explain this in a full video only about this. So the general idea here is that all of those algorithms and software, all of them used together, they print the price that we see on the charts. So they don't use the charts like we do. They use something else. They look at market in a different way. So as a retail trader, in order to make money, you need to find out how to see smart money signature on price. That's why a lot of indicators, they do not work. A lot of patterns and a lot of lines that you draw on the charts, they do not work like that. And I'm going to show you which one of them work, and you're going to be surprised, and which one of them don't work and which one of them can be improved. So this is the real Forex market structure. Again, I give you all of those. Yes, I hope you have got through this. So let's have a look on the comment section, understand how many people have gone and understood by this particular thing. Yes. Bye, BTC. इथेरियम ही बाय है. थैंक यू सर. बीएस राजपूत सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप स्टेप्स बता सकते हैं कि कैश आउट कैसा करें. उसके स्टेप्स पूछ रही हूँ मैं आपसे. ठीक है, तो आपने ये पढ़ लिया गाइस. मैं आपको शेयर करती हूँ. Names and quick Give me 1 explanations minute. so that Yes. तो बताइए, व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट? स्पॉट प्राइस
पिप्स, लॉट्स, पिप वैल्यू, लिवरेजेस, ये सब पता होना चाहिए, करेक्ट? पता होना चाहिए ना, तो ये लगाती हूँ मैं। स्पॉट प्राइस क्या होता है, पिप्स क्या होते हैं, एंड मेरा आई थिंक चार्ज कम है। लेट मी स्टार्ट विद इट। यस, स्पॉट प्राइस, So now let's करंट प्राइस जो होता है उसे स्पॉट प्राइस कहते हैं। ऑर्डर बुक, ऑल बाय एंड सेल ऑर्डर दैट आर ओपन, ठीक है। ऑर्डर बुक करना मतलब आपको बाय और सेल करना है ऑर्डर्स दैट आर ओपन, उसको हम कहते हैं ऑर्डर बुक। उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर बुक। स्पॉट प्राइस मतलब करंट प्राइस। स्पॉट प्राइस मींस करंट प्राइस, जो करंट प्राइस आपका आप देखते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल यूएस का इतना है, इसका इतना है, तो स्पॉट प्राइस मतलब करंट प्राइस, ठीक है। तो ये go through होता है। some terminology. अब आगे We are going to take a आगे पता look at चलेगा, ये some देखिए तब forex तक। trading jargon. Those are going to be words that we are going to use in the future. And the better you understand this now, and the better you learn this now, the better you are going to understand in the future what is going on the price, why is the price moving the way it is, how to choose the right assets, and how to stay away from assets that can hurt your account. So right now we are going to deal with the spot price and the order book, and immediately after that we are going to talk about bid, ask, and spread. Those are the first words that you need to understand. So the spot price is the current price of an asset. So if I open our chart and we look at an asset, we look at Bitcoin or we look at euro dollar, the current price of that asset, it's called spot price. The reason why it's called spot price is because prices are always moving. So spot price means the price that has been spotted when you looked at the chart. Next, the order book is all the buy and the sell orders that are open right now. And the place where buy and sell orders are being held, it's always called the order book. And this is how it works. So let's say that we have an asset and someone wants to buy at 100. This is the price that they want to buy at. And there is someone else that wants to buy at 99. There is someone else that wants to buy at 98. There is someone else that wants to buy at 95. So those are the buyers on the market and the prices that they want to buy at. And then let's say that is someone that wants to sell at 101. There is someone that wants to sell at 102.5. There is someone that wants to sell at 104 and someone that wants to sell at 106. So this is the order book. This is the current order book that we have on this market, on this asset. Then of course we also have the quantity. So those are the buyers, those are the sellers, and of course we also have the quantity. So if this asset would be, for example, euro dollar, if the buyers they want to buy euro at 199, 98, 95, it depends also how many buyers we have at 100, how much euros do they want to buy. We also have quantity. We are going to discuss immediately about quantity and how is quantity measured in Forex. For now, let's just assume that there is one for each, so the quantity is one. Here we have a complete order book with all the open orders. Now let's say that if someone wants to sell at 101 and we have someone that wants to buy at 101 and they have the same quantity, those orders are going to be removed. And now the spot price of the asset is going to move to the next level. So this is how price moves. A buyer and a seller, they get paired up and the asset is going to evolve from this price level to the next price level, which can be up or down. Now the sell price, it's also called the ask price, and the buy price, it's also called the bid. And the difference between the bid and the ask is going to be called the spread. Now usually the assets like Forex, euro dollar, pound dollar, they have a lot of liquidity, and usually it's not going to be a big difference between the bid and the ask. The difference between the bid and the ask, which is called the spread, it's usually added by the brokers, and that's their commission that they get. That's the profit that they get from your trading. So depending on the asset or depending on the broker, the spread can be bigger, can be smaller. The important thing is that you want the asset with the lowest spread. You don't want to lose too much money on the spread. So if we have an asset where the bid price is 32 and the ask price is 29, if you buy at 32 and after that you sell at 29, you just lost 3 units of this asset.
So you're going to notice that most of the brokers, they have those kind of prices where if you buy and you sell in the same time, there is going to be the difference between the bid and ask that is always going to make you lose a certain quantity of money, which is usually in Forex can be 1 pip, 2 pips, 3 pips, and even more for some assets. So the things that we have to remember from here is that on the market, there is going to be sellers and buyers all the time. Sellers, they ask for a price, and buyers, they bid a certain price. And when you enter the market, the price that you see in that moment is called the spot price. When you want to buy an asset, you are going to buy always from the sellers at the price they ask. And when you are going to sell an asset, you are going to sell it to the buyers at the price that they are bidding. You always want the asset with the lowest spread, so you do not lose a lot of money on the spread. If you're going to sell or buy in that exact moment, you are going to be filled at the market price, which can be the ask price or the bid price, depending if you're buying or selling. But you can also do what they do. You can bid or ask, and that can be done with limit orders or stop orders. So you can have an order that you only are available to sell at 104. So you can place that order in the market, and when the price is going to get there and you're going to have a buyer that wants to buy at 104, you're going to get filled in. But we are going to see this later when we are going to look at the chart. So most of the charting platforms, they will have those kind of orders. And you always want an asset with the lowest spread. This is also the way you are going to choose your broker. Later we are going to discuss everything about brokers, because usually if a broker has bigger spreads than other brokers at an asset, is usually going to happen with all the assets. They are going to have bigger spreads everywhere. And there are going to be certain moments in the day where there are high impact news that they are going to make the spread even bigger. So this is what brokers usually do. They are going to have an ask price offered, and always between the bid and ask, they are going to have a few price levels that are going to be the spread. So even if they have buyers and sellers for all the price levels on their order book, they are going to enforce a spread, so they would always make a profit. So they will always make a commission every time someone places an order on their order book. This is how the brokers make money. There are other ways that brokers make money, but we are going to discuss this on the video. Now let's talk about pips. You probably heard about pips before. If you didn't heard anything about pips, you should know that a pip is the minimum change in a price quote as you see it on the charts online. So it's like the measurement unit in Forex. And in this video I'm going to cover everything there is out there about pips. So everything you need to know, all the confusion, all the differences, why some assets have fewer decimals, why some assets have more decimals, why are pips used, more importantly. And you need to know this because a lot of calculations in your trading strategy, in your risk management, in your money management is going to be done based on pips, and the following videos that we are going to do about lots and other stuff. So this is very important stuff that if you remember it, trading is going to be easier for you. So in most of the Forex pair, 1 pip is the 4th decimal number of a price quote. So you see here the 0.0001 is the 4th decimal number in the price, and I'm going to show you that immediately on the charts. But before we go a little deeper, I want to cover a few important things to start with. You're going to see that most of the quotes in charts, they have 5 decimals, and one of them has been added in time. So the 5th one is a point or a pipette. It's also called a pipette or a point. So it's something that usually doesn't matter in calculations, but it's out there, and you don't want to confuse it with a pip. This is the idea. So the reason we have pips and so many decimals, it's because currencies, they barely move in reality. They can stay within 1, 2 or 3 cents for months. So that's why we need more decimals to be able to trade. As we know, the Forex market is a very big market. It's around $6 trillion now, I think.
So you imagine that all those institutions, they trade so much money with those decimal points. And those currencies, in reality, they barely move a few cents. So a cent, it's a big unit in Forex. And a cent or a penny, it's 100 pips. So for a dollar, it's called cent. For a British pound, for example, it's called penny. For euro, it's called cent. So $1 or 1 euro, it's 10,000 pips. So if a currency pair would move for 10,000 pips, that's a big move. So right now the dollar is around 1.17 euros. If the dollar would move 10,000 pips, it will become 2.17 euros. So it's almost double in comparison with the euro, or the other way around. It will become 0.17 euros. We're not going to go now on the charts. I'm just going to show this for a second here. Here we have the euro dollar. The price scale that we have here, this is dollars. So 1 euro is $1.16 right now. The last range that we'll be trading in, so let's look at that range from this high to this low. This range has 400 pips. This means around 4 cents. So let's see if that is true. I can even go here to settings in TradingView, and on the symbol I'm going to change the precision to 2 decimals. So right now the scale looks like this, so we don't have the other decimals, we don't see pips, we only see hundreds of pips. So from here, from 1.14 to here to 1.18, this is 4 cents. So the dollar has moved 4 cents in the last, let's see the period of time now. So let's say from here to now, 34 days, let's say 1 month, around 1 month, the dollar has moved 4 cents. So if you would trade Forex based on cents, that would be probably pretty hard to make money. So that's why we have pips, which splits the coin, the currency, in more units. So now that we covered this information on why do we have pips, we can go forward and solidify this information. So the pip is the 4th decimal number of a price code. The pipette is the 5th decimal number of a price code. I mainly made this if you want to make a screenshot, if you want to write this down, so you can have them later. Maybe write in your notebook that this is the video where you will find this information. This way you don't have to look online, you never have to look for a tutorial. This is all the information about this stuff and about all the calculations you're going to find. Guys, please note this on your picture. Take a picture of this, okay? You can take a picture of this. Give me 1 minute. Yeah. Take a picture of this. तो आप लोग इसे यूज कर सकते हैं and when the time you are going to start with the forex market, you can use here. Thank you BS राजपूत सर. बैनर चाहिए? बैनर आपको डिपॉजिट बैनर पे क्लिक करना है. ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है, प्लीज क्लिक कर लीजिए डिपॉजिट बैनर पे और डिपॉजिट कर लीजिए. रीम मैम, आप एक बार बैनर भेज सकते हैं और एक बार, अगर आप अवेलेबल है तो. Hey KDG sir, welcome to our session. ठीक है. Any questions so far? Okay. Can anyone tell me this? Yeah.
So guys, you can please click the picture of this and you can note it when you want to do your trade and then you take the next trade. Okay. बैनर नरी सर आप प्लीज बैनर पे क्लिक कर लीजिए डिपॉजिट बैनर पे क्लिक करने के बाद आप डिपॉजिट कर सकते हैं ठीक है ठीक है जेडिलिस हाय हाय केडीजी हाय हेलो ओके गाइस अब आप क्या चाहते हैं मैं किसके बारे में डिस्कस करूं मैं आपको दे चुकी हूँ बीटीसी का ट्रेड मैं आपको दे चुकी हूँ बाकी चीजें in this section. So if price moves for अब पिप क्या होता है पिप ये होता है बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ठीक है बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स लेट मी टेल यू दिस The forex exchange market is decentralized over-the-counter OTC marketplace where national currencies. Yes, sir. Jaideep, sir, what's the issue? Tell me, I will help you. Marketplace where national currency are traded against each other. It is the largest and the most liquid financial market in the world. Okay. Currencies are always traded in the pairs. Forex currency always traded in the pairs. So EUR, USD, USD and JPI. So this is going to be the one thing that forex currency always being traded with the pairs. JPY is also a pair and USD is also a pair. When the first currency is the base and the second is the code. Code means the second currency is the code and the first currency going to be the base. What is the base? The first currency. Quote is the second currency. You are simultaneously buying one currency and selling the other. Means you're buying the one currency and you're selling the other currency. Exchange rate are not fixed by central authority. They fluctuate based on global supply and demand dynamics, which are influenced by economic data, interest rates, and geopolitical events. So, the interest rates that you can see, the supply and demand in the forex market actually shift by with the rate of global supply and demand dynamics. So, when you trade or when you do the forex market, forex trading, the supply is basically depend upon the demand. The supply is basically depend upon the dynamics that is happening. Because there is no centralized exchange, the market operates 24 hours a day, 5 days a week, and following the major financial hubs as open in the Sydney, Tokyo, London, and New York. Okay, the trading is dominated by institutional players like central banks, commercial banks, and multinational corporations. Though retail investors also access the market through brokers to speculate on price movement. Okay. So you have to start with the forex when it comes to the two of the currency. Okay. Now about the basics of crypto. Basis of crypto market as a investor who is just a beginner. Crypto market currencies that are always trading. Sorry, nature. Yeah. Okay. So, yeah. The crypto market is a decentralized market, which is a digital marketplace where investors buy and sell and trade the cryptocurrency, which are digital tokens secured by the cryptography. Unlike the traditional stock market, it operates 24 hours into 7 days a week, completely bypassing centralized entities like traditional commercial banks or government. ठीक है? Blockchain ledger, a permanent
decentralized digital public ledger that records all transactions securely across a network of a global computers. Online platform where users swap traditional government fiat, which is called a fiat. What is called a fiat? Swap traditional government currency. It's called fiat. Established platform like Coinbase and Binance. Tools used to store private keys and secure digital assets. They exist as internet connected hot wallets or offline hardware cold wallets. Often referred as digital gold, Bitcoin features a strict capped total supply of 21 million coins. So, what is the coins limit of the Bitcoin? It has 21 million coins. Ethereum programs like programmable blockchains like Ethereum, Solana, infrastructure और decentralized application. तो ये सारे के सारे जो है फेमस इथेरियम कॉइन्स फेमस डिजिटल कॉइन्स है बिटकॉइन है इथेरियम है सोलाना है तो ये सब है digital assets pegged directly to stable traditional currencies such as the US dollar and then USDT. Alternative cryptocurrency that exhibits drastically higher risk profiles and severe price volatility. Complete identify verification. Choose a platform compliant with local financial regulation and complete the required no KYC like identify checks. Link a bank account to deposit local fiat funds. Never invest essential living capital into digital assets. ठीक है Input the asset specific ticker symbol BTC और इथेरियम के आपको ध्यान देना पड़ेगा. Transfer large long-term holdings off to the decentralized exchange into secure non-custodial software or hardware wallet. You have to you have to consider this also. Okay. Extreme volatility. Why there is a volatility? Because crypto prices are experiencing a sharp trend. नरेश सर अगर आपको डिपॉजिट बैनर नहीं मिला आप डिपॉजिट बैनर पे क्लिक कर लीजिए और डिपॉजिट कर लीजिए ठीक है डिपॉजिट बैनर पे क्लिक करके आप डिपॉजिट कर सकते हैं ठीक है I hope it is clear with you right okay कोई डिस्कशन एनी मोर डिस्कशन अबाउट दिस क्रिप्टो के बारे में ट्रेडिंग को बता देती हूँ ये आप देख रहे हैं नीचे ब्लू ब्लू इसका मतलब होता है इतने लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं बिटकॉइन पे द वॉल्यूम
देखिए अभी लास्ट वॉल्यूम कितना है, 78 मिलियन लोगों ने वॉल्यूम इसका ये हो चुका है। देखिए 12। स्विंग देखिए कहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, देख सकते हैं ये स्विंग है। क्यों मैंने बीच का नहीं लिया, बीच का है ना, डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे, फिर और एक स्विंग आया है मार्केट में, करेक्ट, फिर और एक स्विंग आया है, फिर और एक स्विंग, फिर कितना हो सकता है, ये डब्ल्यू बन रहा है यहाँ पे, क्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू बन रहा है। और एक बड़ा कर देती हूँ मैं यहाँ से, एक और, फिर यहाँ से ये वाला बढ़ रहा है, राइट। तो कैन यू सी स्मॉल अपवर्ड ट्रेंड्स। अब क्या होगा, अब देखिए अब इसका क्या पैटर्न होगा। सॉरी मैं बीटीसी का ही बता रही हूँ ना यार, सॉरी मुझे बिटकॉइन का बताना था, मैं आपको गलत बता दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट लेते हैं हम, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, 1, राइट, देन फिर आप देख सकते हैं कैसे ऊपर जा रहा है। एक पॉइंट ये हो गया, इट्स अ वेरी गुड स्विंग, राइट। तो अभी मुझे लग रहा है थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, बट अभी ऊपर जाने वाला है, तो बाय कर लीजिए बीटीसी, इतना जाएगा, इसके ऊपर भी जा सकता है, बट प्लीज गाइस दिस गोइंग टू बी द माय प्रेडिक्शन कि ऊपर इतना जा जाएगा ही जाएगा। नीचे नहीं जाएगा, आई थिंक ये ऊपर ही जाएगा, इतना, इतना तो जाएगा। तो गाइस इसको मैं आपको बताती हूँ, प्रिडिक्शन अपवर्ड, अपवर्ड प्रिडिक्शन, ठीक है, अपवर्ड प्रिडिक्शन दिया मैंने आपको, टेक्स्ट अपवर्ड प्रिडिक्शन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो बिटकॉइन क्या करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है, बिटकॉइन को बाय कर लेंगे, ओके, याद रखना इसे। एनी मोर क्वेश्चन सो फार। रीम मैम आप एक बार डिपॉजिट बैनर भेज सकते हैं। मैंने हाँ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, बट मैं दोबारा कर देती हूँ, कोई इशू नहीं। हाँ प्लीज, नरेश सर आपको भी डिपॉजिट बैनर आएगा, तो रीम मैम इस पे क्लिक करके आप डिपॉजिट कर लीजिए, ठीक है, कोई तकलीफ। यस, IG, ओ सर यस, व्हाट्स द इशू, टेल मी आई हेल्प यू, टेल मी क्या क्या इशू आ रहा है, व्हाट्स द इशू सर। Guys, this is going to be the prediction for the Ethereum, sorry, Bitcoin. Naresh sir, you can click on the deposit banner और उस पर क्लिक करके डिपॉजिट कर लीजिए। जिसको भी डिपॉजिट करना है डिपॉजिट बैनर पे क्लिक करें और डिपॉजिट करें। IGO sir, please tell me, or you want to, you can mention on the comment. तो रीम मैम ने हमको सिग्नल्स के लिए पूछा है, हम बता देते हैं। रीम मैम ने बताया है कि बिटकॉइन और इथेरियम का हमको क्या करना है, बाय या सेल। तो गाइस बाय कीजिए, इथे बाय कीजिए बिटकॉइन को, कितने पे,
63,600 पे बाय कीजिए। अपवर्ड कितना बोला है मैंने आपको? 63,856। 63,600 में बाय होगा ये। ठीक है, BTC बाय। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेरीज? आईजीओ सर, वेटिंग फॉर यू। मुझे गाने प्ले करने हैं बट आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस, तो मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद हम गाने प्ले करेंगे। हाँ, ऑलरेडी 2 आवर्स हो गया ना मेरे ख्याल से। हाँ, 2 आवर्स हो स्टडी गए हैं। इतना सफिशिएंट है। हम्म। मैडम जी, गोल्ड सिल्वर के बारे में आप हमें पक्का बता दीजिए 2027 तक किधर जाएगा? सर इतना दूर की तो मुझे कल ही नहीं पता का कल क्या होगा, कांटेक्ट तो गोल्ड का कांटेक्ट नंबर मैम के पास थोड़ी है। इतना दूर का तो कैसे पता चलेगा सर? इतना दूर का मुझे कल का ही नहीं पता, कल का दिन कैसा होगा, तो कल 27 का कैसे बता दूं? कोई भी, मैं आपको फिर भी बताती हूँ थोड़ा बहुत। इतना दूर का तो नहीं सर, मुझे खुद बता दो तो मैं इसमें कब की इन्वेस्ट कर चुकी हूँ। वो तो बाय मार्केट के बाय ऊपर डिपेंड करता है ना, ऐसा थोड़ी है कि जो मैम बोलेगी वैसे ही हो जाएगा। वही। अंतर्यामी थोड़ी है यहाँ पे कोई। मार्केट बाय के बाय। ऊपर हाँ डिपेंड बोलिए है। मैम। नहीं नहीं, आप करें कंटिन्यू। बाय बाय 111111 जाएगा हमें ऐसा लगता है। गोल्ड इतना ऊपर, आई होप सो जाए तो अच्छी बात है। लगाइए आप पैसे इस पे। ये तो मैंने आपको पॉइंट बता दिया था उस दिन लास्ट वीक, तो आई डोंट थिंक सो ये वहां तक गया है। स्टॉप लॉस बाइंग लॉस के लिए ऊपर लगाया था, अभी तो उतना आया ही नहीं है, तो नीचे गिर गया है। तो इसको तो हम अभी बाय भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी डिक्लाइनिंग स्टेज पे चल रहा है, ये देखिए ना कितना स्लो है। तभी तो बाय मत कीजिए गोल्ड, आई थिंक सो सेल पे ही रखिए, बाद में बाय करेंगे। बाय होने की केसेस में मुझे नहीं दिख रहा कि ये इंक्रीज होगा। आईजीओ सर, आपको कुछ, इफ यू हैव लेफ्ट विथ योर क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, बिकॉज आई वांट टू चेंज द सेगमेंट। आई वांट टू स्टार्ट विद म्यूजिक। बहुत देर से हम पढ़ रहे हैं गाइस, अब मुझे भी थोड़ा सुकून आवाज सुननी है, मतलब म्यूजिक सुनना है कुछ अच्छा। आप लोग बताइए मुझे। ओके, तो ये ऊपर जाएगा तब बाय करेंगे हम इस पे। और ये तो था जब ये ऊपर जाएगा, अच्छा तभी ऊपर ही था। ओके, तो ये डिक्लाइन हुआ है, नहीं कर सकते बाय हम गोल्ड। स्टेबल रेट पे ही चल रहा है गाइस, स्टेबल रेट पे। ठीक है, बीटीसी बाय बाय करेक्ट, बीटीसी को तो बाय करना ही होगा, आपको मैंने बताया ना अभी, वैसे ही करना है बीटीसी। कैटेगरी जो मैंने शेयर किया ना वहां से कर लेना आप। हाँ, ये तो होगा। ठीक है, चलिए 4 o'clock is now, we are like moving into different segment because 4 now। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लास्ट में, क्योंकि बाद में आप पूछते हैं फिर वापस से स्टार्ट नहीं हो पाता है, लेट हो जाता है। बताइए, पूछ लीजिए, कुछ पूछना है ट्रेड्स के बारे में, सिग्नल्स के बारे में, या मैं सेशन चेंज कर दूं? आपको आज फॉरेक्स के बारे में काफी नॉलेज दी है, तो स्टार्टिंग के कौन से पेयर्स खरीदेंगे? यूरोपियन और यूएसडी, याद से खरीदना। ठीक है, कितने पे खरीदेंगे? उसके लिए पहले मुझे इतना बताइए कि आप लोग कितने रियल में इन्वेस्ट करने वाले हो या नहीं, तभी मैं शेयर करूँ ना डिटेल में। चलिए बताइए। एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? आई एम क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। आई डोंट थिंक सो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच हु आर actually wanted to know about Bitcoin, but right now we are completed with this। तो अब मैं म्यूजिक बनाऊंगी, म्यूजिक प्ले करती हूँ। चलिए, हिंदी गाने से शुरू करेंगे।
ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करें आप सब यस यस। बढ़िया से मैंने सब गाना सुना, मैंने गाना अभी तक सुना नहीं है, तो मैं आज यहाँ सुनूंगी अच्छे से। कौन सा ये कॉकटेल 2 का। ओह लेटेस्ट एकदम Rudo. Sai mi chiedo perché mi seduci quando ti avvicini e parli con la gente non capisco mai perché lo fai, sembriamo amici che finiranno nei guai. कर तो कर क्या दिल है तभी मुश्किल है ओ कर तो कर क्या दिल है तभी मुश्किल है बड़े अगर तेरे लिए मर भी जाना उफ नहीं कर दीवाना मामा माशूका ओ मैं माशूका तीर तेरी नजरों का तो कभी ना चूका मामा माशूका ओ मैं माशूका तीर तेरी नजरों का ना कभी चूका Sai mi chiedo perché mi seduci quando ti avvicini e parli con la gente non capisco mai perché lo fai, sembriamo amici che finiranno nei guai. Hit me up, baby. तीर नजर का बनाया तूने जिसे भी निशाना जाने क्यों चाह के भी चाहे ना वो खुद को बचाना जिससे गले से एक पल के लिए भी तू लगा ले पूरी उम्र उस पल में बिता ले वो दीवाना काम दीवानों का होश गंवाना है और हसीनों पे दोष लगाना है Scusa se ti guardo non so più cosa dire, resta con me fino alla fine. Mamma, mamma, asciuga, oh mamma, asciuga. तीर तेरी नजरों का तो कभी ना चूका माशूका ओ मैं माशूका तीर तेरी नजरों का ना कभी चूका Baby cosa c'è? Parlami di te, resta fuori come nel weekend. Baby non lo so, forse partirò, dammi un segno, perché in fondo tu qua vicino dimmi cosa ci fai. Mi chiedi baby quanti posti vedrai, andiamo late, Brunei, UK, LA, se sai di fake ti saluterò. Asciuga, 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 asciuga. Asciuga, 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 come stai? Asciuga, 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 asciuga. Asciuga, 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 come stai? Asciuga, 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 asciuga. Asciuga, 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 come stai? Asciuga, 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 asciuga. Asciuga, 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 come stai? So guys, this was first Hindi song. I think it's good song. इतना बुरा भी नहीं था, अच्छा था। ठीक ठीक मेरे को इतना हाँ, जमा रीमा को नहीं था ना ठीक ये ठीक। हाँ हाँ ठीक ठीक वाली बात है बस यार ठीक ठीक। चलो अब हम लगाते हैं और एक पंजाबी। धना डांसर हेलो कैसे हैं आप
तेरियां दावां मुंडा मार सुटिया तू कादा दिल लुटिया तू मैनू छड्डिया ना कखदा तू मैनू छड्डिया ना कखदा पहला सी तू प्यार पहले प्यार दी पहली कहानी बदलां भी किंज हुन चाके भी ना बदली जानी मन विच मैं सी राजा तू क्यों ना मेरी बनी है रानी खुशियां दा मैं सोचिया अखां विच क्यों दे गई पानी तेरियां दावां मुंडा मार सुटिया तू कादा दिल लुटिया तू मैनू छड्डिया ना कखदा तू मैनू छड्डिया ना कखदा तेरियां दावां मुंडा मार सुटिया तू कादा दिल लुटिया तू मैनू छड्डिया ना कखदा तू मैनू छड्डिया ना कखदा एक दूजे दे कोल कालियां रातां चन्न ते तारे पहलों सी जो वादे हुण ने सब मैनू लगदे लारे अज ही गम नाल पाला वगदे नैणों हंझू खारे फस गए इश्क दे गेड़े विच कातों ना हुण लभण सहारे तेरियां दावां मुंडा मार सुटिया तू कादा दिल लुटिया तू मैनू छड्डिया ना कखदा तू मैनू छड्डिया ना कखदा तेरियां दावां मुंडा मार सुटिया तू कादा दिल लुटिया तू मैनू छड्डिया ना कखदा तू मैनू छड्डिया ना कखदा तेरियां दावां मुंडा मार सुटिया तू कादा दिल लुटिया तू मैनू छड्डिया ना कखदा तू मैनू छड्डिया ना कखदा आदना नाम से कौन सा सॉन्ग बताओ? बताओ। चैट में बताएं आप, वही पे करेंगे। आफ्टर लॉन्ग आप आए हैं तो आप हमें बताएं जरूर। प्लीज, मैं तो चाहती हूँ मुझे लोग बताएं अपने रिकमेंडेशंस। आई लाइक टू प्ले, एग्जैक्टली। क्योंकि मैं खुद के दिमाग से लगा लगा के थक गई। थोड़ी सी शांति मैम के नाम। प्लीज गाइस बताइए आपको क्या सुनना है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है। एप्पल में जो मिलेगा वो मैं लगा दूँ। दाना नाम से बताएं आप। अकबर सर नहीं आए आज? अकबर सर नहीं आया थे, नहीं आया। ओके। पीएस BS राजपूत राजपूत सर सर आप भी आए, बताएं। हाँ। हाँ आप भी बताएं। बेला मैम की वॉइस, बेला मैम नहीं है, जीके सर। मैडम मैम तो काफी टाइम से नहीं है ना। हाँ आफ्टर लॉन्ग। आई थिंक हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। ओके। वो लगा दूँ। या ये लगा दीजिए जरा थोड़ा। यस ऑफ कोर्स। देखा हमारी मैम कितनी प्यारी है। मैं तो खुश होंगे आप लोग। सुनो अच्छे गाने, और क्या चाहिए। और बताइएगा किस जा रहा है वीकेंड? दो लफ्ज की है बात एक ही है, क्यों दरमिया फिर रुकी रुकी, कह भी ना पाए रह भी ना पाए, क्यों बेवजह है ये बेबसी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है हम जिनको
जिंदगी क्या है, प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है, तुझसे ही हर खुशी है, तेरे दम से आशिकी है, जान ले। मिल जाए हम तो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, फिर इस तरह क्यों इस तरह क्यों है अजनबी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। हाँ किसी को ही है मिलता ये जिंदगी में, खुश नसीब है जो हमें मिला जिंदगी में, हाँ किसी को ही है मिलता ये जिंदगी में, खुश नसीब है जो हमें मिला जिंदगी में। तू मोहब्बत है, इश्क है मेरा, एक इबादत है साथ ये तेरा। तू मोहब्बत है, इश्क है मेरा, एक इबादत है साथ ये तेरा। जब दिल से दिल मिले हैं, फिर क्यों ये फासले हैं इस तरह। आ बोल दे तू बोल दे तू या बोल दूं मैं, या बोल दूं कब तक छुपाए ये बेखुदी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है हम जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। तू है तो मैं हूँ, तू है तो नाइस। तो गुड, मजा आ गया। और एक मिनट और बताइए, रिकमेंडेशन, आज तो अच्छे अच्छे गाने प्ले हुए हैं, कोई और रिकमेंडेशन? बीटीसी कॉइन भी मैं शेयर कर दी। बताइए अभी तो कौन सा। हाँ, मजा तो आ रहा है बहुत आज, अच्छे गाने बजा रहे हैं आप लोग, मजा आ रहा है। और कोई और सर? हाँ, रिकमेंडेशन दीजिए आप, तो देखते हैं। कभी मिल के बैठो ठो, हो अजीत। हाय, हेलो, हेलो जी, हेलो। मैंने तो तेरा नाम चुना। एनीवन, कोई रिकमेंडेशंस? इंग्लिश भी चलेंगे गाइस, एंड जो लोग डिफरेंट कंट्रीज से हैं आप लोग भी प्लीज आपके रिकमेंडेशंस दीजिए। Those who are from global countries, from Nigeria and Africa, guys, you are also welcome to give your recommendations.
PS राजपूत सर आप नहीं बता रहे हैं आजकल कोई भी सॉन्ग, ऐसे क्यों? एकदम से ना याद नहीं आता है सर, कोई सॉन्ग पे करना हाँ होता वो है ना तो तो है, एकदम वो से तो है। याद नहीं आता है। नहीं यार। और वैसे याद आ जाता है। हाँ ये वाला अच्छा है सॉन्ग हाँ। बहुत अच्छा। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। तू अगर मेरी ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ, गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा हुआ, गहरा हुआ, गहरा हुआ तेरी याद हुआ, गहरा हुआ तेरा हुआ। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। पलकें झपकता है आसमां, लाखों फरिश्तों की है तू जान। वो पूछते हैं रहती कहाँ, मेरी बाहों में रहती उनको बता। पलकें झपकता है आसमां, उसने भी तुझसा देखा कहाँ। है रौनकें वहाँ तू है जहाँ, मेरी बाहों में रहना यही है दुआ। तू अगर मेरी है फसाना तेरा, तू अगर मेरी तो जमाना तेरा, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ, गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा हुआ तेरा हुआ। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा।
सा मोहब्बत का तू इनकलाब है मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है गहरा हुआ रंग आशिकी गहरा हुआ गहरा हुआ गहरा हुआ दरिया दुआ गहरा हुआ ओके सो कुछ और तड़कता फड़कता गाना बताए जिसमें हम डांस कर सके या डांसिंग वाले गाने। आज ऑडियंस बोल नहीं रही है। हेलो मैम, हेलो हेलो, वाओ, तेरी मैम ने बीटीसी कॉइन्स बेच दिए। कम ऑन गाइस, क्रैप अप फास्ट। मैं लाइकी की कदे मिल के बैठो गल करिए प्यार दी अज काली काली रात मार दी देखो तारियां दी लो हथ तां फड़ो कदे नहीं छड्डदा यार नी तेरी तू दम जान वार नी तुसी हुक्म करो कदे मिल के बैठो गल करिए प्यार दी अज काली काली रात मार दी देखो तारियां दी लो नी तेनू देख के जी लगदा देख दीवा जगदा नी तेनू देख के तां लगदा तू मोरा कोलों सिखदी तोरा दस की चाहनी है जान सुखानी है नी तू जद वाल सुखानी है फिर सुल्फे वांगू चढ़दियां लोरा जो कहेगी जट कर जू गोरिए तुम्हारा चंगा सर जू गोरिए तुसी एवें ना डरो कदे मिल के बैठो गल करिए प्यार दी अज काली काली रात मार दी देखो तारियां दी लो हथ तां फड़ो कदे नहीं छड्डदा यार नी तेरी तू दम जान वार नी तुसी हुक्म करो कदे मिल के बैठो All it took was a single glance. Yeah, it's true, girl, I love you bad. Ooh, baby, got your hands on me. Like it's so dirty, but you look so clean. I just wanna show you what I'm gonna do when it's just me and you. I could be your lifeline, you know I wanna make you mine. I'll never let you go. So baby, take a chance, just grab my hand. Showing you a life full of romance. If you're ready, we can go. कदे मिल के बैठो गल करिए प्यार दी अज काली काली रात मार दी देखो तारियां दी लो हथ तां फड़ो कदे नहीं छड्डदा यार नी तेरी तू दम जान वार नी तुसी हुक्म करो नी टोरा कड्डदी रहनी है हसदी रहनी है नी तू जो सजदी रहनी है होर की दिली मेरे करके नजर मिला ली मैं ऐनक ला ली मैं यादें गानी पाली मैं होर की दिली तेरे करके सो आले हथ फड़ ला यार दा नी औजली नू पाला मारदा नेड़े तो नेड़े हो कदे मिल के बैठो
के आजा गले लग जा, गले लग जा। ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं, मेरे पास आ, मेरे पास आ। तो मुलाकातों में, काली रातों में, बातों ही बातों में दिल दे दिया। तेरी बातों में समझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तेरी बातों में समझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। इस दिल की राहों से, बहकी निगाहों से, कातिल अदाओं से तुझको है फसाना। कुछ मीठी बातों से, कुछ झूठे वादों से, पक्के इरादों से दिल को है चुराना। रख लूं सजा के तुझे सीने से लगा के आजा गले लग जा, गले लग जा। ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं, मेरे पास आ, मेरे पास आ। तो मुलाकातों में, काली रातों में, बातों ही बातों में दिल दे दिया। तेरी बातों में समझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तेरी बातों में समझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। I hope you enjoyed the songs, guys. कुछ डांसिंग वाले सॉन्ग्स में मजा आ गया। चलिए, आप क्या चाहते हैं? वी कैन प्रोसीड विद द गेमिंग पार्ट और वी कैन कंटिन्यू टू प्ले द सॉन्ग्स। अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स वी कैन प्ले। बताइए guys, tell me what's your new recommendation? Can we play the songs or can we just start with the game part? And I will teach you how to play chess today because बहुत सारे लोग को चेस खेलने नहीं पता है, तो मैं आपको चेस कैसे खेलते हो बताती हूँ। मतलब सिखाती नहीं हूँ, बस बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक्सपर्ट नहीं हूँ बट मुझे आता है, तो मैं चेस के बारे में आपसे डिटेल में बात कर सकती हूँ। ठीक है, टेल मी क्या करें बताएं। बताइए गाइस। रीमा, आपको कुछ कमेंट्स आ रहे हैं? नहीं यार, मुझे नहीं यार, शर्माओ मत यार। बता दो, बता दो आप ही बता तो दो कुछ है। बताइए। गेम 1, प्रेस 1 if you want to play game, press 2 for music. सौदा खरा 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 खरा, सौंपली अखियां गुलाब सतरंगा हंस। हाँ मुझे आया है, क्या आ गया? जी, सॉन्ग याद आ ये गया क्या बोले आपको? सॉन्ग सॉन्ग हम्म। सॉन्ग के लिए पूछा है। हम्म। चलिए सॉन्ग लगाते हो। री मैम, आपका कोई रिकमेंडेशन है? नहीं नहीं मैम, जो आप प्ले करते हैं हम तो वही सुन लेंगे। ओके। Feel me, I'm the breeze, baby. I'm the ocean, sky, and hills, baby. Baby, I'm the forest and the trees, baby. You're the voice and I'm the wheels, baby. Baby. तेरा भी आ दिल सब जानदा, तू जो मिली जापे कोई हानदा, लाल होया रंग आसमान दा, रूप जिवें निखरी रकान दा, जिथे जिथे जा
वांगू ठारे गबरू मंग ले जे दिल लेना चाहनी है हस हस सूड़ी ते चारे गबरू मंग ले जे दिल लेना चाहनी है हस हस सूड़ी ते चारे गबरू ਵਿੱਚ ਵਾਈਨੀ ਹੋਵੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੋਰਾਈਨੀ ਉਹ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਧੁੱਪ ਚ ਨਾ ਖੁਰਜੇ ਆਂਦੇ ਆਪ ਪਾਸੇ ਕਰੇ ਸ਼ਾਈਨੀ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀਏ ਪੱਥਰੇ ਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੱਭਰੂ ਮੰਗ ਲੈ ਜੇ ਦਿਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨੀ ਐ ਹੱਸ ਹੱਸ ਸੂੜੀ ਤੇ ਚਾੜੇ ਗੱਭਰੂ ਮੰਗ ਲੈ ਜੇ ਦਿਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨੀ ਐ ਹੱਸ ਹੱਸ ਸੂੜੀ ਤੇ ਚਾੜੇ ਗੱਭਰੂ मरना मैं तेरिया बाहां च चनवे सौ तेरे प्यार दी मैं चकी होई है तो गाने की लिस्ट तो लंबी है बट लेट्स प्ले सम गेम गाइस। हेलो मैम, हेलो सर, हेलो, कैसे हैं आप सब? आप लोग अभी आए तो भी कोई बात नहीं, वेलकम टू माय सेशन। तो गाइस मैं आपको चेस के बारे में बताती हूँ। एक इंसान और एक पार्टिसिपेंट ने यहाँ पे हमने एक गेम के लिए कहा था। तो मैं गेम के लिए आपको बताना चाहती हूँ एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है चेस के बारे में। मैं चेस के बारे में इससे बोल रही हूँ गाइस, इट्स अंडररेटेड गेम। आप लोग चेस खेले, आपका माइंड बहुत अच्छा चलेगा। इट्स नॉट समथिंग मिथ नहीं है कोई, पर सच में चेस में यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। आपका फोकस लेवल तो बढ़ ही जाएगा। सॉरी, मैंने ओपेरा खोल दिया, एक मिनट। सॉरी सॉरी, या तो चेस खेलते हैं हम। आज मैं आपको एक एक चीज बताती हूँ कि चेस कैसे खेला जाता है। तो प्लीज लुक, हैव अ लुक ऑन दिस। ठीक है, तो चेस खेलने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरी है? चेस खेलना जरूरी है। इसके लिए चेस का बोर्ड चाहिए आपको। आप ऑनलाइन भी खेल सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ। आई डू प्ले चेस अ लॉट। तो देखिए गाइस, जो चेस होता है उसमें एक तो आपको पता है कि ब्लैक होती है गोटियां, कुछ वाइट होती है। आपको आपको कोई भी साइड मिल सकती है, ऐसे नहीं कि आपको पर्टिकुलर साइज चूज करनी है, कोई भी साइड पे हो सकते हैं, ब्लैक में, रेड और व्हाइट में। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 के 7 पॉन्स होता है। पॉन, PAWN, पॉन, ये पॉन होता है। तो ये आपके लिए जो एक किंगडम, लाइक एक किंगडम है, एक महल है, उसके ये लोग होता है। ठीक है, पॉन। तो ये जो पॉन होता है ये सबसे पहले आगे चलता है। ठीक है, सबसे पहले आप इनको भी मूव कर सकते हैं, लेकिन पॉन सबसे पहले आगे जाता है। ठीक है, ये एक एक ही कदम चल सकते हैं, ये दो दो कदम नहीं चल सकते। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। आपको ये दिख रहा होगा, ये जो है ये एलिफेंट है, हाथी, ऊंट कहते हैं इसको। ऊंट जो है वो सीधा हॉरिजॉन्टली और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, और ये क्या हो गया, वर्टिकली हो गया ना। हाँ, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही चल सकता है, डायगोनल नहीं चल सकता। ठीक है, ऊंट। घोड़ा, दिस इज हॉर्स, इट्स हॉर्स। घोड़ा हमेशा ढाई चाल चलता है। ढाई मतलब एल, हमेशा एल में घोड़ा आगे जाएगा। जैसे अभी ये यहाँ पे है तो 1 2 3, 1 2 3, या फिर यहाँ पे 1 2 3। हमेशा एल बनाना है आपको घोड़े के टाइम पे। ठीक है, घोड़ा हमेशा एल चलता है।
ये जो होता है ये सिपाही होता है। सिपाही हमेशा डायगोनल ही चलता है, ये कभी स्ट्रेट नहीं चल सकता। सिपाही हमेशा डायगोनल जाता है। जो हाथी होता है वो स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जाता है। घोड़ा जो है वो ढाई चाल चलता है यानी एल शेप। आई एम डूइंग गुड सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग SEA सर। एंड जो ये सिपाही होता है, इसे सोल्जर, ये ऑलवेज मूव हॉरिजॉन्टली, सो ऑलवेज कि हॉरिजॉन्टली जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं राजा की साइड में, शी इज क्वीन। क्वीन जो है वो कहीं से भी चल सकती है, कितना भी चल सकती है, शी हैज दैट पावर। ये यहाँ से सीधा भी चल सकती है, लास्ट तक आ सकती है, कितने भी स्क्वायर आगे जा सकती है। ये यहाँ से डायगोनल जा सकती है, ये वर्टिकल जा सकती है, ये सब टाइप की चाल चल सकती है, बट बॉक्स टू बॉक्स। हाँ, अगर ये जो बॉक्स पे है कलर के, उसी बॉक्स पे इसको आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे खड़ी है और डायरेक्ट यहाँ आ जाए व्हाइट बॉक्स। ओके, बॉक्स टू बॉक्स। तो ये ऐसे चलती है, शी हैज इट्स पावर। राजा हमेशा एक कदम चलता है, राजा का भी चेक होता है, बट राजा ऑलवेज गो वन स्टेप ओनली। ये फिर से सिपाही है, दो सिपाही है, फिर से हॉरिजॉन्टल जाएंगे। अलग अलग बॉक्स के होते हैं, ये व्हाइट के हैं तो ये ब्लैक के, ऐसे बॉक्स से हॉरिजॉन्टल जाएंगे। अगेन हॉर्स, एल एल शेप, 1 2 3। जहां पे भी हॉर्स प्लेस्ड है आपका, वहां से आपको एल बनाना है। जैसे अब ये हॉर्स यहाँ पे है तो 1 2 3, ये हॉर्स यहाँ पे है, 1 2 3, उसका बॉक्स छोड़ के आगे वाले बॉक्स से एल बनाना। एल सीधा हो सकता है, एल उल्टा हो सकता है, एल कैसा भी हो सकता है, बट एल बनाना, एल सीधा या एल उल्टा। ठीक है, बॉक्स बनाना। अगेन एलिफेंट, स्ट्रेट मतलब पूरा हॉरिजॉन्टल सीधा, या तो वर्टिकल। ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा, एक तो सीधा और एक साइड में, साइड लाइन में जाएगा, का एंड तक भी जा सकता। तो लेट्स प्ले। हमेशा व्हाइट स्टार्ट करता है, ठीक है। देखा, अभी घोड़ा कैसे चला, 1 2 3, एल। ये मुझे उड़ाएगा अभी, देखना। नहीं उड़ाया तो मैं उसे उड़ा देती हूँ, क्योंकि जो ये होता है पॉन, वो हमेशा टेढ़े से मार सकता है, मतलब ये साइड से हॉरिजॉन्टली जो होता है उसको मार सकता है, तो आई विल हिट। ओके, ये मुझे मार सकती है अगर इसमें दिमाग होगा तो। नहीं मारा, आउट। फिर से अगेन हॉरिजॉन्टली, पॉन किसी को भी हॉरिजॉन्टली मार सकता है। और हमें देखो क्वीन आ गई नीचे, हमें ध्यान रखना होगा अब। अब मैं क्वीन को मारूंगी मेरी क्वीन से, देखिए, किल, मार दिया। अब ये राजा को क्या आ गया, चेक। जब क्वीन सामने आती है किसी के भी तो उसको चेक मिलता है, राजा के सामने अगर क्वीन आ गई तो उसको चेक मिलता है। अब ये क्या है, ये घोड़ा आ गया, अगर मैंने अपना हिलाया कहीं से भी ये क्वीन, तो ये सीधा मुझे मार देगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको कहीं भी डाल सकती हूँ जो बता रहा है, बट आई विल चूज टू गो हियर, बिकॉज मुझे मरना नहीं है अभी। ठीक है, अभी फिर से 1 2 3, अब फिर से मैं आगे जाऊंगी और मुझे घोड़े को मारना है। ये मैंने मार दिया, ये मैंने मार दिया। और जब भी ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगी क्वीन। पॉन अगर इस दूसरे लेग, दूसरे टेरिटरी में जाएगा तो क्वीन बन जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास दो क्वीन है। चेक, अब राजा ने मुझे मार दिया, इट्स फाइन, इट्स ओके। अब आप देख सकते हैं उनके कितने कम बचे और हमारे कितने ज्यादा। ठीक है, अभी मैं राजा को चेक देने वाली हूँ, आई विल गिव हिम अ चेक पॉन सोल्जर के थ्रू। आई वांट टू गिव हिम अ चेक। आप मुझे हाथी उड़ाना है, हाथी उड़ाने के लिए मुझे उधर जाना पड़ेगा, उस साइड पे।
तो मुझे राजा को चेक देना पड़ेगा। मैं राजा को चेक कैसे दूं? मुझे अपने हाथी को बाहर निकालना पड़ेगा, तब राजा का चेक आएगा। ठीक है, अब ये रहा चेक। सॉरी, यस, राजा को मैंने चेक दिया हाथी के थ्रू। अब सामने क्या आ गया? फिर से हमारा आ गया सोल्जर। तो अभी हमें इस वाले से सोल्जर को मार देंगे। अभी फिर से चेस, अभी देखो, अभी ये यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसको मारना है, तो मैं यहाँ से इसको उड़ा दूँ। तो मैंने ये हाथी मार दिया और राजा को फिर से चेक दे दिया। अब मैं यहाँ पे मार दूंगी, तो राजा क्या है, अब चेकमेट होने वाला है। मुझे चेकमेट करना है, क्योंकि अब सब मैंने इनके मार दिए। आपने देखा, मैंने सब इनके मार दिए। अभी मुझे राजा को चेक देना है, ठीक है? तो मैं अब राजा को चेकमेट करूंगी ध्यान से। पहले मुझे राजा को कोने में लेके जाना। जब भी आपको चेकमेट देना है ना राजा को, हमेशा से कोने में लेके जाना, ठीक है? मैं कोने में लेके जाऊंगी, फिर चेकमेट करूंगी। अब ये देखिए, ये आ रहा है, तो इसको हमें बचाना होगा, क्योंकि अब ये नीचे अगर ब्लैक आ गया तो ये बन जाएगी क्वीन। और क्यों? अगर क्योंकि दूसरे का, अगर आप दूसरे के टेरिटरी में पॉन लेके जाएंगे तो वो क्वीन बन जाएगी। तो याद रखना, क्वीन बन सकती है, हाथी बन सकता है, सोल्जर बन सकता है। तो हमें इसको मारना है पहले। तो इसको यहाँ आने दो, फिर मैं इसको मारती हूँ। तब तक मैं राजा को चेक देती हूँ। फिर से चेक, फिर से चेक, फिर से चेक, फिर से चेक। मैं बढ़ने ही नहीं दूंगी उसको आगे। वेट, ये ना चेकमेट का थोड़ा इशू मुझे होता है वैसे। श्योर, या चेक, फिर से चेक। अब नीचे भी नहीं आ सकता राजा। आई होप आई डू द चेकमेट ऑल्सो। मुझे एक, वेट, मैं अभी हाथी निकालती हूँ। या चेक। आपको राजा से बचना भी होगा, बिकॉज राजा क्या है, मार भी सकता है अगर आप उसके पास गए तो। आई डोंट नो ये चेकमेट कब होगा, बट आई ट्राई, क्योंकि मुझे इसे चेकमेट तो करना है भाई। मैं चेकमेट में कच्ची हूँ थोड़ी। मैं आई ट्राई कि मैं चेकमेट करूँ। ओह नो, समथिंग यू हैव टू मेक इट। ये जान दो। मैं, अच्छा ये देखो, क्वीन आ गई ना। मैं मार देती हूँ इसकी क्वीन। मार दी मैंने, देखा? आप घोड़े से क्वीन भी मार सकते हो। अब चलो, इसको मैं ब्लॉक करती हूँ। लेट्स ब्लॉक हिम। ही गॉट चेकमेट गाइस। सी, आई चेक्ड हिम अप। इसको कहते हैं चेकमेट, एंड दिस गोइंग टू बी माय विक्ट्री। ओके, देखिए आपने। अब 2 मिनट रुकिए।
यस गाइस, तो आपने देखा ऐसे खेला जाता है चेस। कुछ क्वेश्चन है आपको पूछने कि लाइक कैसा लगा आपको चेस खेला? 10 मिनट्स। हे ग्रेट, थैंक यू गाइस, थैंक यू ऐसी सर। आई होप चेस खेलना इजी है, आपको बस थोड़ा सा एक बार रिव्यू करा दूंगी मैं, आप लोग भी खेल सकते हैं, मजा आएगा। ठीक है, तो दिस वाज अ गेम। नाउ वी कैन मूव टू अनदर पार्ट। जैक के बारे में पूछ रहे थे ना मुझसे, गिव मी 1 मिनट। जैक, बाय और सेल? What to do right now? री मैम ने भी वही पूछा है। एक मिनट री मैम, मैं देखती हूँ, मैं जेक के बारे में पढ़ा नहीं। If you're holding Zcash right now, the most tactical move depends upon your entry price and risk tolerance. It depends upon the risk tolerance. Is experiencing intense volatility, is currently hovering around 46900, fluctuating rapidly. After recent drop, so if you're sitting on the profits, अगर आप लोग profits portion of the holding, the recent price crashes heavily by way profit taking, indicating if you're looking buy to dip. Crucial is this. Mm, I have no idea, but I'll try. मुझे समझ नहीं आ रहा, एक मिनट। I need a redemption code. Redemption code क्या होता है? What is redemption code? डी मैम आपको पता है? वो आपको ना आपके अकाउंट मैनेजर भी प्रोवाइड करा देते हैं, एल्स अगर वो भी नहीं हो रहा है तो फिर आप कस्टमर सपोर्ट से कनेक्ट कर लीजिए, वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ये न्यू होंगे मेरे ख्याल से ना। इट इज देखिए, अगर आपको मैं ये सिंपल पूछ रही हूँ इससे बिकॉज मैंने इसके बारे में अभी स्टडी नहीं की है जेक के बारे में, तो मैं आपको इससे भी बता रही हूँ। It is on a sale. The price fell from its high to $5. Oh, sorry, 543 down around 411, 469. You are buying the dip. Long-term big investment major firms are still locking away the coins, and emerging software fix just resolved a major network scare patching. So it was around like this. तो आप देख सकते हैं कि 411 like $4 से 411 to 469 you are buying the dip. अगर आप जो प्राइस अगर जेक का 4543 से नीचे जा रहा है तो आप क्या करें, या 411 तक जा रहा है तो आप कम में आप बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, बिग इन्वेस्टमेंट मेजर फर्म आर स्टिल लॉकिंग अवे द कॉइन्स। सो अभी के लिए क्या करना चाहिए, अगर आप बाय कर दे तो वो ऑलरेडी कम चेक कम प्राइस में आप बाय करेंगे। तो अभी के लिए अभी क्या कर सकते हैं कि बिग इन्वेस्टर एंड मेजर फर्म आर स्टिल लॉकिंग अवे द कॉइन। तो अभी अगर आप बाय करेंगे तो अभी इंस्टेंट प्रॉफिट तो नहीं होगा, ठीक है, इट विल टेक टाइम टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। एंड सेल करेंगे तो क्रिप्टो just sold heavily to lock in their own cash. So अगर प्राइस स्लिप करती है $400 से 434 लाइन तक, इट कुड पैनिक एंड क्रैश लोअर अ मैसिव सिस्टम। तो अभी के लिए क्या करें, जेक को बाय कर लीजिए गाइस। आपका ओवरऑल कंक्लूजन ये कि यू हैव टू जस्ट बाय द जेक। जेक बाय करने के बाद आपको जो मिलेगा कुछ मार्जिन में, यू कैन अर्न प्रॉफिट बट नॉट ऑन अ इंस्टेंट, like not on an instant period। और आगे जाने के बाद भी it will take a lot of time to move, okay? ऊपर जाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी बाय कर लीजिए जेक। कंक्लूजन है, क्योंकि अगर आपने अभी सेल किया तो सारे लोग सेल करेंगे और प्राइस लोअर जाएगा। अगर प्राइस लोअर जा रहा है तो देर मत करना, सेल कर देना। जेक आप बताइए मैं क्या करूं?
सर BS राजपूत सर अब ये बाय कर लीजिए, अगर जेक का प्राइस $411 या 469 ऐसे के बीच में गिर गया तो सेल कर देना, ठीक है। 411 या 469 सेल कर देना, अभी के लिए बाय कर लो, ठीक है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस? 5 minutes टू गो। अगर आपको डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट बैनर पे क्लिक करें और डिपॉजिट करें, ठीक है। ठीक है BS राजपूत सर, थैंक यू सो मच। डिपॉजिट बैनर पे क्लिक करें और डिपॉजिट करें, अपना अकाउंट ओपन करें। Hello everybody, how are you? I hope you're fine. I am welcome to you, my people. Thank you, sir, for joining our streaming. Thank you so much. We are about to end the stream on 5 minutes. Okay, guys, I hope it is well and nice streaming with you. And we have learned a lot today about the Forex, about the crypto, about the trade signals. I appreciate if you guys deposit and keep depositing on my live streaming so that we can help you. And I have already like being in a group where the members are raised to 6,000, I think 6 to 7,000 members are like associated with us on a group on BtcDana. So I really like to expand this group to more number of members that can like always welcome to join our streaming and our group. मुझे एक मोचन कोड चाहिए सर, redemption कोड आपको अकाउंट मैनेजर आई थिंक प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारी चीजें एंड yes guys, please join this session again tomorrow from 2 p.m. to 5 p.m. IST. We will be having a lot of fun. I hope you have understood something. हम कर लेंगे bye bye BTC. Okay. So guys, thank you so much for joining us and I hope आपको चेस समझ में आया हो. I hope आपको BTC समझ में आया हो, इथेरियम समझ में आया हो और गोल्ड, आई थिंक गोल्ड मैंने किया था राइट, गोल्ड के बारे में बताया था, जेक भी बताया था. तो गाइस keep joining and keep learning about it और आप अपना प्लीज अकाउंट खोलें हमारे साथ. It would be so much good if you guys अकाउंट ओपन करेंगे हमारे साथ, डिपॉजिट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. आपको $2 का कैशबैक भी मिलेगा, BTC कॉइन्स भी मिलेंगे, कैश कूपन्स, गिफ्ट कूपन्स मिलेंगे और क्या चाहिए. प्लीज आप लोग जो है वो अच्छे से डिपॉजिट करें और अच्छे से अकाउंट ओपन करें और ट्रेड करें, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. चलेगा. रीमा मैम आपको कुछ कहना है? No, actually, thank you so much, Shubhi ma'am, for sharing these wonderful information with us. And thank you आप सभी का guys कि आप लोग वीकेंड के टाइम पर भी हमारी लाइव को ज्वाइन करते हैं, डिपॉजिट करते हैं. एंड ये जो लाइव है वो 3 hours तक चलती है, बट स्टिल आप लोग स्टेबल रहते हैं 3 घंटे तक यहाँ पे, उसके लिए थैंक यू सो मच. और सैटरडे संडे लाइव रहती है, सिर्फ 2 ही लाइव रहती है वीक में. तो आप सभी ऐसे ही ज्वाइन करते रहिएगा, डिपॉजिट करते रहिए सो दैट आपको इतनी जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है वो थोड़ी वसूल हो जाए. ठीक है, तो आप सभी डिपॉजिट भी करते रहें. इतनी इन्फॉर्मेशन आपको और किसी भी लाइव में नहीं प्रोवाइड होती है, ये आप सभी जानते हैं. आपको प्रिपेयर कर दिया जाता है मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करने के लिए, तो दैट वाज ग्रेट आई थिंक. और कल भी ज्वाइन कीजिएगा, कल हमारी लाइव रहेगी 2 to 5. कोई भी इशू आता है, जो भी आपकी क्वेश्चन है ना वो आप आज नोट डाउन कर लीजिएगा और कल आप मैम से पूछिएगा, ठीक है. यस, बाकी कोई इशू आता है तो आप पूछ सकते हैं प्राइवेट चैट में एनी टाइम. तो मिलते हैं कल लाइव में जो कि है 2 बजे, यस, ठीक है. 2 वाइंड से अप करना है. 5. हाँ, यस 2 से 5. Till then, मैम. take care, bye bye, and happy weekend. Thank you, ma'am. Happy weekend. Thank you Reem ma'am, thank you so much. Bye bye guys, take care. Bye Reem ma'am. Bye.